वो आज जाना ना आज बोल है बने दात बघितले का दात बघितले का हा असं काय केलं Hello, Mahesh sir. Yes, sir, you can start. Yeah, Shivani has joined. She is the trainer, and Vinay sir. Okay, wait. Make them co-host. Ask them to unmute and say hi. So I'll... Yeah. Very good morning, sir. This is Vinay Rudrapure, sir, from GTT. So Vinay. Yes, sir. Is this Vinay audible, sir? Rudrapure, correct? Yes, sir. I have make you co-host. Now you can share. Fine, sir. Thank you very much. Any other? Yes, sir. Vicky sir. Shivani ma'am. शिवानी चौरसिया और शिवानी सालुंके. Salunke. Yes, sir. Radhika ma'am, please mute yourself. Yes, Vicky sir and Nana ma'am, you can start. Good morning, everyone. I welcome you all for the 5 days training program, which is organized with Armite Institute of Engineering College from Shahpur. The today's training program is basically on the Python, and by the end of the 5 days, I hope everyone will also be able to program with help of the machine level programming. So we welcome all the students from all over the Maharashtra. We have many registrations from Jalgaon, Shahada. We have many registrations from Panvel side. So we welcome all the college students from Mumbai and outside universities. And I welcome all the dignitaries as HOD of our college. Mr. Mayank Mangal has joined, and all the staff of computer department. From the training side, there is the GTT Training Institute, which is training provider,
Mr. Vinay Rudrapure has joined, and the trainer for today's is Miss Shivani Salunke. I welcome all and congratulate all the students to take the benefit of this 5 days program and have the maximum participation in this program. I would like to hand over to our HOD, Mr. Mayank Mangal sir, for the introduction of the departments and college. Thanks, sir. Thank you, Vicky sir. Thank you very much for organizing this STTP or workshop. As we can see here that there are lot of participants has joined and many more are going to join. We have also started live streaming on YouTube. So those who are unable to join by this Zoom meeting, they can directly go to the YouTube link. There also you can find this session live streaming. Okay. So that link will be provided to you in a while. So for now, I would like to show our department, that is and our college. Our college is Alamuri Ratnamala Institute of Engineering Technology, that is run by Koti Vidya Charitable Trust. We are situated in Shahapur, that is located in Asangao. Asangao local station is there, and we are in Thane district. So we are running all the courses related to our you can say degree, like that you can see here also. We are running degree, that is the engineering degree in 7 streams, that is the computer engineering, one is the information technology, and another is artificial intelligence and machine learning. And the other branches are electrical engineering, electronics and telecommunication engineering, mechanical engineering, and civil engineering. So we are with these 7 branches in degree. With engineering, we are having 4 branches in diploma. Even we are introducing this year the 5th branch, that is artificial intelligence and machine learning in diploma also. So we are having 5 branches in diploma, that is the civil engineering, mechanical engineering, electronics and telecommunication engineering, and artificial intelligence and machine learning, and mechatronics. So these are the 5 branches. Mechatronics we have added in last year only. So with that, we are running 2 master's courses also. In masters, we are having masters of engineering, and the second one is masters in management studies. So in masters in engineering, we are having 3 courses. The 3 courses are computer engineering, electronics and telecommunication engineering, and mechanical engineering. And in MMS, we are having different 5 streams. So with this, I would like to show you one video from our college website, that what we are and what we are offering.
रोड में करे So, guys, आप लोगों को समझ गया होगा कि what we are providing. So basically, we are focusing on developing student as an entrepreneur, and just not we are teaching for degree purpose. जैसे कि रहता है डिग्री पर्पस के लिए टीच करते हैं स्टूडेंट्स टीचर्स. So we are not teaching for degree purpose. Why we are teaching? We are taking regular sessions or on personality development to groom students as a corporate leaders. Okay. And we also conduct sessions on pre-placement talks, where जैसे कि स्टूडेंट को मेनली फोकस क्या रहता है आफ्टर इंजीनियरिंग, दे हैव टू बी अ जॉब रेडी. सो जॉब रेडी बनाने के लिए हम लोगों को उनको प्री प्लेसमेंट थिंग्स देनी पड़ती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, एप्टीट्यूड स्किल्स एंड टेक्निकल skills, more about technical skills. So one of the technical skills we are conducting right now, that is the Python हर किसी स्ट्रीम में, हर किसी प्रोग्राम में और हर किसी फील्ड में आज के टाइम पे यूज हो रही है. सो दैट्स व्हाई वी हैव कंडक्टेड पाइथन फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एंड फॉर डिग्री स्टूडेंट्स आल्सो. ठीक है. सो पाइथन इज यूजफुल फॉर एवरी स्ट्रीम एंड एवरी ब्रांच. सो वी आल्सो कंडक्ट sessions for pre-placement talks, personal interviews and group discussions. So this is also required for job ready for the students. So we always conduct this for free of cost for the students to become job ready and to become industry ready for the students. And we are running incubation center also. So with that, I would like to welcome all the students, those who have joined us, all the coordinators, those who have conducted this great workshop. I would like to welcome our college chairman Sri A.V. Gupta sir. I would like to welcome our campus director and founder trustee Dr. L.S. Botra sir. I would like to welcome our in-charge principal Dr. Barai sir. I would like to welcome our academics dean Professor Battam Jayarajesh sir, and all the HODs, all the staff from Armite and all the staff from other colleges, and all my dear students. Welcome all of you. I would like to call our coordinator, Mr. Vicky Patil sir, Nana Mishra ma'am, and Radhika Mundra ma'am to continue the session. Thank you. Vicky sir.
Thank you, sir. I would like to introduce our trainer, Ms. Shivani Salunke. She is from GTT, and also Mr. Vinay Rudrapure. Hello, Vinay sir. Hello. Vinay sir. Yes, sir. Thank you very much, sir, for this warm welcome. And I will request Shivani ma'am to introduce herself, and Vicky sir allow us to start the trainings. Then we will move forward. Yes, sir. Yes, Shivani ma'am, over to you. Hello everybody, this is Shamangi here. So I'm going to take your training for 5 days on Python. So should I continue? I need few access to this. I don't have access. Yeah. Yes, ma'am. Wait. And ma'am, can you start your video also? Actually, I have problem with my camera. That's the issue with me. Okay. We have also back camera use. I'm on my desktop. I think that's not possible for me to. Oh, okay, my screen is Yeah, ma'am. visible Yes, to you, please. everybody. Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. Yes. Yes. Fine. So let's just talk about what exactly Python is, right? Right? It is just a general purpose programming. As you know, machine learning is trending nowadays. The reason behind is that Python makes the codes of machine learning so simpler than other codes. It has lots of library, easy syntax, and everything. As you know that, as don't know you have seen or not, but yeah, in C# or in C the coding is very difficult, and in Python it doesn't look like. Okay, so the purpose to create Python uh, was to make syntax that much easy that after reading the syntax only you will get an idea what exactly the code is doing over there. Fine. So there are numerous features of Python, like different platforms you can use on different platforms, Linux, Ubuntu, Windows, like that. Just look like English. Just reading the syntax, you'll get an idea what exactly is happening over there. Allow you to write codes in fewer lines. Interpreted system. Okay. Then prototyping is very quick in Pythons. Oops, real-time problems can be resolved using this. Then dynamic means no initialization required over there. For example, in CPP, right? You used to initialize like this is integer, this is float, this is something. In Python, you don't need to do that. It understands what you are writing over there. So it makes everything easy. Now, some factors are like simplicity, means in Python you don't use brackets like CCPP. They need just indentation. A tab space is enough. Is my voice audible to you No, ma'am. now? Yes, yes, yes. You are audible, ma'am. Yes, ma'am, audible. Yes, ma'am. Yes, Did, ma'am. did you hear what I explained before? Yes, ma'am. Yes, All ma'am. participants, you are comfortable with English language now? Or we should change the language to Yes, Hindi or ma'am. Marathi? Yes, sir. Yes. Yes, yes, yes. If anyone is having any problem regarding language, then please put in the chat box. So we will accordingly change our style to deliver. No, sir, it's all right. Okay. Okay, somebody muted me. Fine. Please don't do that next time.
So I was just summarizing my features like simplicity. Here in Python, you just need an tab space and indentation over the brackets. No needs of brackets or parentheses like other languages. Then it is an open source, means you can use on any other platform. You don't have restrictions to download the source file. And portability, when you share your code with each other, it will open same to the others. In few languages, when you share your code, it does not open as same to the others. They cannot do few corrections and like that. They have restrictions on file. In Python, you don't have that restrictions and issue. Then embedded property, allowed to add different language within itself. In Python only, you can add some C codes, not C codes, C sharp codes she has, and like some mathematical codes, or you can say machine learning, data science, pandas, different libraries you can use within Python. There is no issue using them. Then interpretation, the code is interpreted line by line. The management of the memory is so strong. As you go on the other parentheses, it free up the memory of previous code. Means as memory clears so fast over there, the it will provide you a better result. A quick output will be shown on the screen. Then Python, the biggest thing here is Python has the biggest library, a huge library. Means just in C++, for summations, we used to add a plus b plus c. Here you have a functions, right? That is a function, but libraries like pandas, matplotlib, sklearn, uh, huge mathematical terms or mathematical calculations can be done without imposing a proper what we say, a proper formula over there. We can use library function and we just need to initialize, yes, this is this, and this functions will do this. You need to define functions after defining the library, that's it. Then oops, everybody knows that real time problem can be resolved. Particular data elements help replacing real world problems. That is all in oops. Some, I guess, some examples are like security agencies for interpretation, analysis, threat analysis. For threat analysis, Python is used. And okay, so one more example is when you search a movie on Hotstar or Netflix, after searching one or two options, it will show you recommendations, right? Now, how they generate recommendations? They predict that you have searched this movie, so you might like fighting scenes or fighting movies or some other kind of movies, right? So these all predictions code, this all analysis and everything code is written in Python mainly, right? That is the biggest example you can see around you where the Python is using. Now, same in the Googles. Now, if you search, uh, same in the Googles, like same search engines. If you search three, four things, same thing three, four times, after writing three, four letters itself, it will show you the result. Yeah, you might looking for this. The same things happen over there, same things written in Python again. And also it is used for searching feature servers, right? Same thing. And okay, and written in, it's all everything written in Python, like other features, Raspberry Pi. If you're familiar with that, it's a mini computer, not with all features, but very few specific features. But the controller is self-made by Python itself. So this is just a overview of what exactly is Python. Okay, so I'll show you few basic syntax of Python over here.
So tell me one thing. You people are using ideally PyCharm or Jupyter Notebook. No, What kind? ideally. Ideally. Ideally, ma'am. Okay. Ma'am, So PyCharm. Okay. No worries. Okay, you can use any platform over here. Fine. If you get any issue in that platform, please let me know. Fine. Because I am going to use Jupyter Notebook because I have that features installed in my laptop. Fine. So my Jupyter Notebook is visible to you guys, right? Yes, Yes, ma'am. Yes. Fine. Ma'am, can we maximize this screen? Yeah, just a second. Is it okay for now? Yes. Yes, ma'am. Okay, fine. Just give me one. Okay. For example, you have to take input from user in X variable. So X is equals to input. That's all. In double quotes or in single quotes, you can take this. So I'm here using double quote for now. As I say, enter the value. I mean, Jupyter, we use the input function. In Python, we use input function. But in ideally, we can simply define the variable and value x is equal to 5. That's it. Yeah, obviously you can define, but I want to take input from user. Okay. I'm here taking input from user. So I'll ask user enter the value of X. Fine. Now to print this, print X. Now here, as I've taken the input, now it will ask enter the value of X. I'll enter 10. Now entering 10 after I pass a line print X means I want to print the input value. I can remove this. Yeah. In Python, here you use hash for comment line. Okay. Or for multiple comments, if you want to give multiple comments, just here. This 3 apostrophe is fine. This is your multiple comment statement like this. Fine. Or for single statement, you'll go for hash. Okay. So I'll run this again. I'll give input 10. This is how you take input from user. Or you were saying that we can initialize X equals to 10, right? Definitely you can do that. I can print X. I can do over here. See, this means the initialization of your variable. This means you're taking input from the user. Try to make your code user friendly. Don't stick to a particular point or on a particular specific values. Better it be a user friendly program to you. Now, as I say, if you want to take a very specific input like int, in integer or in the float, so simply you can do this input, write int over here, brackets, and close your brackets. That's it.
int input, enter the value of x. Now, when the user will enter the value, it will definitely consider as int, because in the previous int, you have seen we have entered the value. It might be float. It considers that it is float value. It may be. So here I can also enter float. So I'll run it again, 10.5 like that. So it is taking 10.5, right? So here we'll restrict to our integer value. Let me print this. Print x, fine. Now I'll enter 10.5. See, you can see the error. You have to only enter the integer number. Then fine. This works. Now for float, right? Float. Now here you can enter, right? For specific kind of programs, these restrictions are given over there. So better you don't prefer int or for when it is not specified. Okay, in string, you don't need to define a string. That's not necessary over here, right? कि यहाँ पे हमने int की जगह string ले दिया, string input like that. Don't do that. Okay. Fine. So will you try a small program taking input and output? Okay, try yourself. And yes, those who are using IDLE, make sure that you are writing in a normal window. Don't write in an output cell section. Most of the people do this mistake. Better you check in which tab you are writing your code. Earlier it won't run. So check where you are writing exactly. So here, take what kind of program you guys do? Okay. Before that, I'll tell you way to print. Now here I have print just by giving x types. You can print your variable, right? I'll define a equal to 10 and b equal to 20 here. Print a. Fine. This is one way. Then you can print in the way my variable means any notation you can give over here, anything. My variable, comma, your variable name. Suppose I say a. As I said, you can do this in single quotes also. So here is a single quote, my variable. Don't get confused on few sites. They have very different kind of printing statements. So there are few, I'm telling you. And now print over here. Now here, variable and this curly brackets. So curly bracket is used to hold the position over here. Fine. Just a second, we'll print the statement. So you can see 3 statements. My 3 print statements are printed over here. Okay. Now we'll go for 4th. So this is my placeholder. Variable means placeholder for such variables of my function. You can write anything is this. Means this is also a placeholder. Now here you have to define at which place which variables should be put in there. So you'll put dot format a comma b. We'll see. Okay.
So here you can see variable 10 of my function is 20. Now this statement doesn't make sense, but I'm telling you this is a placeholder, and dot format means filling that place with that variable type. So these are few procedures to print a statement. So everybody is familiar with operators, keywords, identifiers, case sensitive statements like that. I'll get a quick revisions on that. We'll have a quick revisions. So here we'll start with keywords. Fine. So keywords like return, print, try, while, as, for. You can not use this words as name of your variable. These are specific keywords to perform a functions. Fine. Here you can see that print is a keyword. It is coming in green. Float is a keyword. Input is a keyword. Okay. So true, false, case, and in is, in fact, is and in is also a keyword. Fine. As, while, these are the basic keywords we use. Fine. So identifiers, a name given to an entity, that is your identifier, a class or a variable function to your variable function, a entity type. Now there are basic rules of that. Lower and uppercase you can use, digits, underscore. Fine. Counts start with digits, you know that. Then keywords are not used as identifiers, basic rule. And then special characters like hash, hash, star, any of that you cannot use in this. It can be of any length. You can use identifier of any length, right? So it's a case sensitive. Fine. Now we'll look into variables. Now variable is a short name of something like that. For example, number, you write num. Fine. So give a sensible name to things. If your variable is number, don't just write n. You won't understand later what exactly was n, why, what is n. So give some sensible name to your variable, a small sensible name. Fine. In small codes you can write x, y, a, b, c, n, x, z, anything. But if you are writing few lines code, a bigger code, try to give a sensible name over there. Same thing, case sensitive, no special characters can be used in this. Underscore, underscore, right? You can use with underscore, letters. You can start, in fact, in this you can start with letters. Now constants. Now constant means some specific values. For example, your value of pi. Now pi is a constant value, 3.14. That cannot be changed, isn't it? So that are constants, and you can define your constant variables like x equal to 10 throughout the program. That's a global variable. And in the parenthesis you can define a local variable, x equal to 10, x equal to something according to your values. Fine. So when you want to define things globally, better you write in caps. For example, I'm taking pi is equals to 3.14. So I'll define like this. After that, I'll import something not in caps lock. Right. Here you can see import is also a keyword, green again. Now that 3.14 is not like that. That's a specific value, or pi ho gaya, gravity ho gayi. Gravity is 9.8. So before importing, you can define your constant values that will work throughout the program as same. Now in parenthesis after import statement, I say import statement, for example, x equals to 10. Yeah.
y equals to 20, something like that. Fine. That's just your local definitions. Till the parenthesis run, this x and y will work, and this pi will work throughout the program as same. Okay. So the rules for this is like uppercase and lowercase, combinations of letters, underscore to separate, you can use underscores, and capital letter to declare the constant. Basically, there is a methodology. When we have to declare a constant variable, we write in capital letter. Always. We prefer to write in that. Fine. So this was all the basics. I think there is no issue till now. Any of you have any issue can let me know in the chat box. Any of you facing any issue till now? Anything that you didn't get in touch with? All the terms. What is okay? Fine. Just give me a moment. Okay, Priyanka, you just get joined now. Okay, don't worry. I'm giving a small task. By the time you'll understand, I have just covered the basics till now. Yeah, attendance link will share you. I'll share attendance link time to time. I'll share you attendance link time to time. Just wait for a while. Yeah, my screen is going to be visible in few seconds. Just wait. Okay. Zoom meeting. Fine, my screen is visible to you guys right now. Okay. So we have covered till all the basics. Fine. Now, here you are asked to do is like ask user. Now here is a task for you, a small input and condition checking task. Acha. Okay, you don't know about this. Fine. Fine. Don't do this. Okay. Now simply ask user to enter the age. Fine. And print that in
four printing, four different. Statements. Fine. I have taught you 4 types of printing statements, right? Practice that once. We'll directly switch to a different topic. I want a quick response in this. This is just an input taking. Yes, people on Ideally, do you getting any issues over there? Any issues in Ideally? This is just to take an input. Do it quickly, or we'll switch to for loops. Done. Fine. Just a second. Fine. यहाँ तक ठीक है. Now we'll see if else statement. First we'll see if else statements, then we'll jump into for loop. Okay. Shivangi ma'am, this is Vinay ma'am. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Shivangi ma'am, I request all the students to, if they having any doubts now, just unmute themselves and ask the doubts, because it's not possible for the trainer to every time see your chat box and all, because it will move upside. So if Okay, you're okay. having any doubts in between the training or after completing this one point now, you ask the unmute yourself and you ask one by one doubt. So that the trainer should know that what the doubts you are facing and what the trouble you are facing. So on the spot, it will be get clear. So should I give permission to unmute the participant, sir? Right now? Yes, yes, sir, yes, allow them, because they are asking doubts on the chat box, so it's not possible for all the time to see the chat box. Dear students, please keep in mind, then whenever you required, then only you can unmute, otherwise all will be disturbed. And please mute yourself whenever it is not required. Okay, thank you. Yes, ma'am, please continue. Okay. You want me to show codes like this? Okay, so here you can see I can print age in 3 different ways. Now in the fourth options, okay.
Fine. You guys having trouble in attendance link? Ma'am, why you repeated the sentence with a double comma, a double inverted comma and single inverted comma? Here. My variable is, yeah, that one. Okay, so I'm just telling that you can use double quotes and single quotes. Okay. Now here you ask the question. This is the output of this, obviously. Now, if I have to print, give me a moment, just a moment. Oh, as I explained earlier, we can use single and double quotes both in the Pythons. We have that option over here. Okay, as I want to print apple and yes, now here you can see now apple is in single quote and orange is in single quotes. Means for specific words like this. Now you can use here this. There is no error in this. Now I can print the statement. Fine. Appointment. Fine. So now I have to print. Now I have to print some link over here. Suppose I'll take this itself. Now tell me what is the output of this? What output it will give? It will simply print the Whatever you have message. given, it will print the message. Print the message. Kernel title. Fine. Hello. Hello, ma'am.
screen is not visible. आपका स्क्रीन गया. मैम ये ऐसा आउटपुट क्यों है? हेलो हेलो मैम. Yes. Yes, tell me what's the issue here? Someone is speaking. Ma'am, why this output is come? Why this output is come means? Apple and orange are from some domain. So ma'am, at the down, ma'am, The notebook writing is shown. I'm just telling that you can use single quotes inside the double quotes. I'm just telling that you can use this, but you have to close. In this, you can see now here I have printed apple and orange in quotes. Now in double quotes, you cannot do this now. When you're using double quotes, inside that use single quotes like that. This is what I'm telling over here. Don't get complicated. Ma'am, in the attendance, ma'am, there are lot of. Hello, Yes. ma'am, attendance, ma'am. I am a student, but ma'am, employer name is not. I'm not an employer, ma'am. So what should I do? You can put your college name over there. And there is no need to upload any resume or anything. These are the optional things. So you can keep it as it is. So what's about appointment letter? You can keep it as it is. There is no need to upload. Okay, sir. Okay. Only whatever things you know, you please fill the things, and in employer name you can put your college name. Okay. Sir, appointment letter is not required, na? No, not required. Vinay sir, can we remove that appointment letter from the form? Yes, sir, we can do that. I request all the students, those who are facing any challenges while filling the attendance now, we will discuss it later on the group. So Yes. right now, please concentrate on the training. We will discuss it later, and I will share the attendance link in group 2. And whatever the doubts will be there, I will clear over there. Okay, But, sir. Okay. after 1 o'clock only. So please concentrate on the training right now. Thank you, sir. Yes, ma'am. Please continue. Voice is Okay, not. fine. Am Good I morning, audible right everyone. now? Can you please confirm whether am I audible to everyone? Just a small Yes, instruction sir. over here. Yes, yes. I hope you all are having your editors in either of your mobile or laptops. Is it? Yeah, yeah. Hello, Yes. students. Can you please confirm once? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there's a small instruction over here. So whenever a small concept is being covered and a small task has been given, make sure that you perform that task at your end and you give the confirmation that yes, you are able to do that or you were not able to do that, or whether it's done, it's in progress, whatever is the update. Make sure that you give this update in the group on the chat window or at least in the mic.
Okay, because we want this session to be practical oriented. That means when Shivangi ma'am is training, we also want to make sure that after completing her explanation, she will give a small task for you all to do, and you need to do that right away, so that this session becomes practical oriented. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay. So we'll look into if else statement. Okay. So like I ask user to enter the age. Now I'll check the condition. His age is under 18 or above 18. Now if Screen is not visible. Yes, ma'am. Screen is not visible. Yes, ma'am. Screen is not visible. Hello, ma'am. Yes, yes. Dear, I think there is some network issue. She will be in back in 1 minute only. Yes, yes. She will back in 1 minute, beta. Okay, sir. Okay, sir. am I audible now? Yes, sir. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. There's some network glitch. Please hold on. The screen will be shared right away. Okay, my screen is visible to you. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here I ask user to enter the age. Now if the age is less than 18. Now here colon, this is a syntax, right? This is your conditions, this is your if, and this is colon for the next line. Matlab, to start the parenthesis over here. Now print a statement not eligible. Okay. Or you can write the age is less than 18. Else. Colon again. Print. Whatever you feel like, right? Yeah, you are eligible. We'll run this. Now we'll enter 40. Here you can see it is eligible over here. Now I'll write 12 over here. Not eligible. It's just a simple program of if else. Fine, you understand the syntax. This is how you start if statement, colons. Now else statement. Now for multiple if else statement, you are going to use LF. Now I'll do extensions on this again. LF. Suppose age is greater than 50. Again, I'll print not eligible. Fine. Now for multiple if else, you don't need not to write if else, just write LF. You can use numerous LF over here, LF, then end your if else with else statement. Now I say 60, not eligible. Fine. So this is just a small syntax over here. Okay. Any doubts here? Any queries till now? Hello, ma'am. No, ma'am.
Ma'am. Okay, fine. So if you don't have any queries, one small question for you students. Can you answer me this? If age is less than 18 and after the colon, why the print is shifted towards the right? Why is print not written after if immediately, below if immediately? In Python, we don't have Because to in write Python, parentheses. indentation We is have to indent. Perfect. We have to indent for a code of block. One of the discipline maintained in Python, which was not a mandatory. indentation is Python. Yes, it wasn't mandatory in other languages, but Python asks you to maintain the indentation so that the blocks are identified properly. Now there's a small task for you all guys. The task is you have to ask the user the birth year. Birth year, what should be the birth year? It should be the birth date or birth only the year that you have born. When I'm talking about birth year, should you enter the entire date of birth or only the year of birth? Year, only year. Yes. Only year. Birth, what should be the type of the year of birth? Should it be string or integer? Integer. 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 Right. So I want you all to do the task based on this program that you see in front of you. The task is you have to ask the user the birth year and calculate the age of that user based on the birth year that user has given as input. And after that, after you calculate the age, you have to check whether the user is eligible for the driving license to apply for the driving license. Come on, hurry up, do it now. You have 10 minutes. I hope everyone has got the task. I'll repeat. Ask the user to enter the birth year. Based on the birth year given input from the user, calculate the age. Based on the calculated age, check whether the user is eligible to apply for the driving license or not. If yes, print a message that you are eligible for applying for the driving license. Else print you are not eligible for applying for the driving license. Hurry up. Hello, sir. आपको पढ़ाते सारे मुसड़ी अरे सेशन लेने वाले भी टाप टाप के सेशन लेते हैं तीन करके बैठ कर रहेगा अच्छा पास तीन करके बैठ कर तो कुछ भी पता है क्या नहीं हाँ अभी गए थे मीटिंग करने वगैरह कुछ ही हो रहा है नहीं इतना सुना था प्रॉब्लम चल रही पर ज्यादा डीप में नहीं नहीं जाना चाहिए नहीं जाना आपका क्या मानना नहीं जाना चाहिए पानी देना मेरी उम्र के हिसाब से टेंशन मैं भी टेंशन लूंगा
मैं तो स्टार्टिंग से मतलब सिर्फ मेरी पढ़ाई और उस पर फोकस करता। आज सुबह क्या हुआ, मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता, मेरी डेली की आदत है। तो गोलू आके मेरी मजाक उड़ाता पूरा। कल दिखा दो ना गोलू कैसा करता तू। वो मेरी मजा लेने लग गया, मेरी मम्मी को देख, मेरी मम्मी सब खड़ी, सामने लोग खड़े, वहीं पे मजा ले रहा मेरी। क्या बोले, मैम ए वो म्यूट करना यार। Please बोले तेरे mute को your याद है क्या mic. भाई कहता था तेरा गोलू आका, माइक टेढ़ा चालू मेढ़ा है, वाला। म्यूट करने से सब लोग मजे लेंगे। मैम मेरा हो गया मैम, दिखाओ मैम। Okay, fine. We'll wait for a few minutes. By the time mother will do. मैम if else का यूज करके मैम किया मैम। Okay, good. Hello, ma'am. Yes. Actually, please explain your this concept. Sorry, I'm not able to hear you. Hello, ma'am. Yes, tell me. वो जाएगा निकल इसी बातें करता हूँ। Please explain this concept. लेकिन Sorry, what? बात करता हूँ। ये टाइम था क्या बोले बच्चों को, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैम ये भावेश को निकाल दो, इसका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। यस मैम। यस मिस, बहुत डिस्टर्ब हैमर लग रहा है मेरे को। What were you saying? Sorry, I didn't hear you. मैम जिसका भी बाइक चालू है मैम उसको मैम रिमूव कर दो मैम मीटिंग से। यस मैम, वरना आपको फालतू में प्रॉब्लम होगा, कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होता है। यस मैम। जो लोग अग्री करते हैं Just a second. And now everybody is muted. No issues. Hello, ma'am. Yes. Screen is not visible. Yeah. Everybody completed that task given by the sir? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Okay, fine. So one more task from my side. Just a moment. Okay, now here is task. You have specific username. Suppose your username is admin, right? किसी को कोई डाउट है अभी तक? Any issues? Any queries till now? नो मैम। यस मैम, ये विजुअल स्टूडियो कोड में भी हम पाइथन का ये लिख सकते हैं ना मैम? Yes, you can write in Visual Studio also. ओके मैम। There's no issue. और सबलाइन? And we can also write in Google Colab. सबलाइन में चलेगा? Not a problem at all. You can use the editor of your choice. You can use VS Code. You can use IDLE, Google Colab, Sublime, whatsoever editor you are compatible with. Syntax remains the same. मोबाइल में भी ऐप है। Yes, yes. You can use the mobile app also, which is called as PyDroid. Whitehead Junior. Go on Play Store and search for PyDroid. You will get an app. Sir, I would prefer Microsoft. You choose whatever editor you want as per your convenience.
Fine. Ma'am, continue. Okay, so fine. Now here is this is your username and password is 123. Now here this is your stored value. Fine. Now here you ask user enter the ask user to enter the username password again and use if else statement to check whether the enter password username fine. Now here you have username as admin, password as 1234. Ask user to enter the username and password. Use if else statement to check the username and password. Now you have to compare. I'm giving a hint that you have to compare this username with the entered username. Now here you require another variables to take input of username and password. Fine. Try this. Same if else statements, but the only thing is change over here is conditions. Now my question is clear to everyone. Is there any doubt in questions? People who have repeat the question. Yeah, I'll repeat the question for you all. Take an example that username is equal to admin and password is equal to 1234. Okay. And now after storing these values in username and password, you have to ask the user to enter the username and password in some other variables and compare that user entered username password with this username and password which you have stored in the variable and check whether user has entered the correct username password or not. Ma'am, I have a doubt that this time we have to keep the username and password as a constant variable. So we have to write in capital letters only. No, you don't have to keep it constant. You are just temporarily storing these values. Those are not constant values. Okay, sir. Thank you. Ma'am, you're mute. Yeah, I'm waiting for you guys to do this task. If you get any query, let me know. Try this task by yourself. Okay, ma'am.
Kunal, I compiled your code. I am getting an error. Kunal, Yeah. कुछ गलत हो गया उसमें। I compiled your code. I'm getting an error. Is there error, sir? Yes. Okay, I will correct it. Wait. वे पंडित खान जो सही में हैक हुआ था क्या? अरे यार कहाँ से तो डायरेक्ट पेपर सकता है। Shit. हो गया। Yeah, we can see most of the students have done it. Good. So I have done it. Sorry, Chintu. So I have done it. you're still doing it. Okay. So I'm done with it. Oh, you are done with it. Yes, sir. Yeah. Okay, great. Few other students are still sending the codes. Just hold on for a minute and we'll proceed. मैम एक बार मैम आप भी दोस्त दिखा दो। Sorry. Sir, he is someone- asking from trainer end. Sorry. Yeah, he is asking from your end to run. Okay, you want Okay. me to run code? Yes, Oh. yes. How many of you are still trying? Actually, some students are from very basic level, na ma'am. So they are facing problem. To do They that, have not we're just used waiting for Python. others to finish and then she will continue with this. Yeah. She'll also Okay, write the don't code. worry. I'll explain you the code. Don't worry. First finish your attempts, then I'll tell you what exactly it is.
Meanwhile, Shivangi, you can start writing and then side by side, they can get it. Okay. And students, those who are not unable to find any app or any editor for this Python, then please text in chat. So we'll provide you link. Okay, sir. So please provide the link. Sir, is it correct now? I think, sir, in 10 minutes we have to ask students that they have started or not that editor or any application to run the codes. Because most of the students are calling that they are not yet started. Guys, are you still struggling to find the editor? Is it so? No, sir, Microsoft Word. Just using. give the link. Any candidates, if you're facing any issues, I'll right away share the link for the app. Sir, someone just shared the link. Yes, yes. Mr. Jasjit Singh has shared. So dear students, if you are facing any problem, don't left the meeting or don't left the session or don't left the group. Just try to ask once. Hello. Hello, sir. Can you please exclude Jasjit Singh from the group? He has shared the link which is irrelevant. Okay, sir. Who is Jasjit Singh? Kindly remove him from the group because he has shared the link which is not relevant to the code. Okay, okay, sir. Sir, please share the link. So you automatically left. Hello. Good morning. How many of you facing an issue in this? Any of you facing issue over here? Sorry? The voice is not clear. Ma'am,
Ma'am, Yes. ma'am, in if condition password underscore in will come, na? Yeah, you can directly compare to admin, or either you can here compare with No. username or Password is password. to be written instead of password in. Password underscore in. This is what the concern is. By mistake. Yeah, fine, you can write. No. Instead of comparing password underscore in is to be written over there, variable. Yeah, yes, we can do that. मैम आपके कोड में एरर है, जहाँ पे आपने पासवर्ड इक्वल टू लिखा है ना, उधर पासवर्ड अंडरस्कोर इन होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। कंपाइलर में सेम बता रहा है। Sorry, I'm facing some issue over here. My voice is clear to you? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. I have network issues. Okay. So, what were you saying? You guys are saying something to me. Raj, you have some query? No, sir. Okay. Fine. Run the code, Shivangi. Enter the password has to be in int. Yes, right. That's the issue. Hello. So here you can see it is giving the desired output. Fine, I think there is no issue you're facing till now. Yeah. Any of you facing any issue? हेलो मैम। Yes. मैम वहां पर इंट नहीं डाला तो क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि वो डायरेक्टली फ्लोट में कंसिडर कर रहा ना वैल्यू में। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब हम कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं तो वो उसको फ्लोट में कंसिडर करता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे भी उसने उसको वैसे ही कंसिडर किया। उसका डेटा टाइप आप चेक कर सकते हो कि जो इनपुट है उसका डेटा टाइप क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल Hello. हाँ, yes, what is the issue? Ma'am, मैंने chat run this, please. The chat box.
Ma'am, this call is not run in mobile, ma'am. So can you please put it in the chat box? Hello. Hello. I'm so sorry, my mic was muted. Yeah, which code you're talking about? Which code is giving you an invalid? Putting in the chat box also. Please, can you check the chat box? Chat box has been disabled for all the participants. So you please tell orally. And if you are getting an error, copy paste this code. Take the code, see the code that you are seeing it on the screen, and write the exact code. You won't get an error. No, sir, but the thing is, if we don't apply any logic, then what's the reason for writing the code? Sorry, what's the concern? I'm directly message to student. Many students are messaging that done properly. So I think we can go ahead. Yes, sir. Sir, one more concern. Kindly disable the unmute option for every student. Yes, yes. If at all they Sir, have but then how we will ask query? you have any queries, do it on WhatsApp group. Send it on Sir, WhatsApp. Telegram. This is Telegram not only. the, come on, man, I'm leaving this meeting. What the fuck? There Yes, is sir. no group. They can unmute, sir. You can raise your hand. We will unmute you. If you have doubts, just raise your hand. We will unmute you. Okay. You have written underscore in after username. Yeah, just to separate in which variable I'm taking an input. You can give any name here and here. That's just a notation. Okay. I think nobody has doubt till here. Any of you facing any problems, let me know. Hello.
Ma'am, I am doubt. Yes. Yes, ma'am. मैम जहाँ पे आपने वो इफ में यूजर नेम इन इज इक्वल टू एडमिन यूज किया है, वहाँ पे हम यूजर नेम यूज कर सकते हैं? हाँ, definitely you can compare variables over here. You can write username underscore n equal to username. No issue in that. Okay, fine. I think everyone, ma'am, password. Okay, do it by yourself. Typos होते रहते हैं. Fine. So, can anybody tell me what is difference between for loop, while loop? Why we use for, where we use while? Can anyone tell me that? Any of you? Why we use or where we use for, where we use while? Yes. Tell me, why? What is the purpose of while and what is the purpose of for? While is a entry loop. Like true, false. Okay. Yes, ma'am. While is a conditional statement. Okay. Any else point you want to add in this? Can you first tell me the question again so I can think of a better answer than that? I'm just asking simple importance of for and while. Why for and why while? Ma'am, these can are I tell you a difference? Chintu. Ma'am, in for loop, where it only goes till a specific time, like how much it is required. But in while, it goes unlimited. Okay. Fine. Now one more point I'm going to add on this. Now, if we want to repeat few statements, right? We have to repeat some argument or to repeat numerous time again and again. We are not going to copy paste code again and again. Instead of doing that, we just put that statement or conditions or that iteration in the for loop. Fine. To print that statement again and again. The simple basic example of why we use for loop. And now while loop is to satisfy the conditions, right? It's a conditional statement. Now if I ask you to count something, some number of iterations, you're not going to count 1, 2, 3, 4 like that, right? You'll use while loop to satisfy the condition. It will count how many times that specific thing is iterated. Fine. The basic simple thing why we use for and while. Okay, so we'll see syntax of for loop. The screen is visible to you, right? The screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please continue. I guess ma'am is just disconnected. I'll just ask her on WhatsApp. Just a minute.
Hello, Shivani ma'am. Yes, dear, we are giving you next task. Wait for 5 minutes. I guess she has lost her internet connection. Students, just wait for a while. Mr. Gagan, have you received that registration message? In that you will find Telegram group. So you can add in Telegram group. You can join. Dear students, till now, uh, Shivani ma'am is joining. So I would like to show our college academics. Yeah, sir, please go on. Please go on. How we are running our classes and our practicals and all the things in this pandemic situation. Okay, so guys, this is visible to you. This is our LMS platform. So what is the benefit of this platform? Whatever lectures we are taking, that lectures will be recorded or stored as a video lecture in your accounts, in students accounts. Okay, and the teacher is also able to give the quizzes on the basis of topics, the assignments, the practical questions on the basis of topics, the PPTs and the ebooks on the related topics. Whatever the teacher is teaching, all the e-contents will be visible to the students using this LMS portal. So we are using this LMS portal. तो उसका benefit क्या है? Whenever one teacher is teaches something and the students, those who are taking the lecture, if they want to solve the quiz regarding the topic, so that will be more clear. The concept will be more clear whenever they will attempt the quiz related to the topic in the lecture itself. Okay, so I will show you some examples, and by tomorrow you all will be able to access all the contents related to this Python workshop. Okay, all contents will be readily available for you guys, like STT, like PPT, like ebook, and like quizzes, assignment questions and practical questions related to the training, to this training. Okay, so you all will get all the e-contents regarding this STTP. So don't worry about the material regarding this STTP workshop. You just focus on the training. All things will be provided to you. Because I will show you, for example, how we are taking one of the classes I am showing you. Suppose everyone knows regarding database management system. Okay. So here you can see these are the chapter names of the database management system. So all students can see these chapter names from here only. And then if they want to access the contents of the chapter 1, so they can directly go to this folder. They will find all the e-content regarding this topic, which the teacher has uploaded. Okay, the videos they have uploaded regarding the topic, the lectures they have taken. Here you can find the lectures also. On that day they have taken the lecture, or he or she has taken the lecture. Okay, this is the study material you will find for every topic. This is the PPT by which the teacher is teaching, or this will help you to go throughout the topic. Okay, like that we are running our courses and classes. These are the assignment and practical questions. So for that the student has to submit whenever the teacher required. Teacher will ask to submit, will give the date. So by that date you have to submit, and in student login you will find the respond button here. So whatever the assignment is there, you have to write the assignment answers and then submit.
according to the time. These are the solutions. We are providing solutions also of the quizzes and the as well as the assignments. Okay, so whatever assignment the teacher will give, they will provide you solutions also. Like these are the Yes, students, if you have any doubts, please ask. yes, these are the quizzes which is designed by the teacher. So these are the quiz related to the topic. So there are 5 to 6 questions for each and every topic you will get. Means hourly, suppose that the topic is containing 1 hour contents. Okay, so according to 1 hour, we are providing 5 to 6 MCQs or one MRQ also. MRQ means multiple right choice question. Means one question is having multiple answers. So that type of questions is also we are providing, because nowadays all the patterns are online and all the examiners are going through MCQ, MRQ pattern and subjective also. So we are Yes, providing every like this. topic will be covered completely. You don't have to worry about anything. Yeah. Each and every topic, we have questions for them. Yeah, so we will provide you all the study material regarding this STTP by tomorrow itself. So don't worry about the material, and you will find the video link on YouTube also. And if you want access of these e-contents, so we will provide you access also. Okay. So ma'am has joined. No, sir, I don't think she has joined. Students, do one thing. There are many students who have joined who have joined unnecessarily. Please turn on your video once and we shall have an introduction first. Yeah. Students, all of you, please turn on your videos. Yeah. Now go on, please. Please start introducing yourself. Let's start with Shivangi Chaurasia. Please introduce yourself to everyone. Hello, I am Shivangi Chaurasia and I am from T Poly, Nagpur Polytechnic from Information Technology, and I am in second year. Okay, now Harsh Bhanushali, please go on. Harsh, you are unmute. Yes, yes. They can Yeah. unmute, sir. Yeah, yes, sir. I am Yeah. studying in diploma third Harsh, year, go on, please. computer bench, and I am from Shivaji Rao Jondre Polytechnic from Asundao. Okay. Hello, sir. I am Palash from Nagpur. My college name is Sri Datta Polytechnic. Okay, okay, now continue. Please continue. And then web I'm talking about. Please go on, students. Shubham. Okay, anybody else? You can start introducing yourself. Please go on. So my name is Palash. I am from Nagpur. Okay, now continue. Keep going. Yash Gala. I am Yash Gala from Thakur Polytechnic from computer department. Okay. Mrinalini Singh. Hello. All right. Okay, so you have many students. Okay, continue. Madhuri Kedam. मैं क्या बोला सर? So my name is Arush Gida. Okay, okay, beta. How old are you? I'm 10 years old. And I study in Arya Vidya Mandir Bandra West, 6th standard. आपको इसलिए तो बोला था ना कि एकदम पहले बात करके फिक्स करो दोनों को. All right, students, keep introducing yourself. Roshan Sonavne, please continue. My name is Roshan Sonone. I am studying in Artificial Intelligence Machine Learning first year. Okay. Then we have Chetli Patil. Chetli, beta, please unmute the mic. Chetli.
Okay, no problem. My your video, please students introduce yourselves so that we can have an interactive session, please. Weber Sutar. Yes, sir. I'm Vaibhav Sudhar from Computer Engineering Department. I'm in first year from Thakur Polytechnic, Mumbai. Okay, no problem. Anyone else? Okay, students. Okay, so no one is introducing. Yeah, Hello, we sir. have My name Arpit. is Yeah. Pradeep Dubey. I am from Praveen Patil College. I'm in diploma, second year Okay. Okay, in Arpit. IT field. Hello. Okay, okay. Hello, I'm Rakhi Anybody? Ambure from Institute of Technology, Polytechnic Technology, third year, computer branch. Hello, sir. Okay. Yeah, Kalpesh, go on. I'm from Shahada and studying in D.N. Patel College of Engineering, Shahada. BTech last year. Okay. Students, please turn on your video. Sir, myself Kaustubh Tabilkar. I am IT Information and College Alamuri Ratanmala Institute. Okay, okay. Continue. Deadpool, Chinmay Sujit Joshi, please continue. My name is Chinmay Sujit Joshi. I am from Rizvi College of Engineering, third year EXTC. Okay. Hardik Pandey, where are you? Hardik Pandey. Hardik Pandey, please unmute yourself and introduce yourself to the class. Okay, no problem. Tushar Patil, go on. Hello, Professor Mayank. Yes, I'm ma'am. resume over here. Yes, Please yes, let ma'am. me know when to Okay, start. okay. No Yes, problem. Students, you can turn off your videos or you can turn them on. Ma'am will start now. All right. Okay. Sir, can we leave now? You can. Please, everyone. So whatever we have learned today, so we can resume it from tomorrow. On the No. There is a session after 10 minutes. Yes. For now, you can leave. There is a session after 10 minutes. Okay. So you Sir, can same continue. link. You can Same remain. link. Same link is there. You can remain on the in the meeting also. Otherwise, you Okay, can thank you, leave sir. for 10 minutes. Thank you. Okay. The session will be resumes after 10 minutes. Okay, sir. सर Yes. सर ये जो लेक्चर हो रहा है ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? Yes, dear. तो सर ये एडफ्लाई पे अवेलेबल रहेगा ना? Yes. सर YouTube पे सर YouTube ये पे वैसे कोर्स कितने दिन का? 5 days course is the workshop is 5 there, days का course है. and you all will get WhatsApp पे message certificates कर दो. also once you will complete this course. बट टेलीग्राम बोला है ना? हाँ, प्लीज स्टूडेंट्स टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो. All the students, please join Telegram link. Sir, yes. Can we share Telegram link in the chat box? Vicky, Yes, sir, we No, can sir. share. No, sir. Yes, sir, yes. Sir, please resend the Telegram link. Yes. In chat box, we are sending the Telegram link. Wait for 1 minute. सर Yes. सर एक ना सर उसमें ना सर नोटिस डाल दो सर इंस्ट्रक्शन तो सर फालतू के ना सर चैट्स नहीं होंगे सर ग्रुप पे. Okay. Okay, students, I hope you all had a great time. All right, all the best. We'll start in 10 minutes. All right. Okay, sir. Thank you, sir.
Yes, Priyanka, what is the problem? Sir, can you send the link of app in the chat box? भेजा है बेटा, पहले भेजा था ना, विजुअल स्टूडियो कोड का लिंक है ना। एक सेकंड में वापस भेज देता हूँ। भेज दिया मैंने, मिला आपको? प्रोफेसर मंगल, मैंने आपको भेज दिया, आप प्लीज एवरीवन को भेज दीजिए। Yes, yes, yes. स्टूडेंट्स, ये जो कोर्स है आप सबको फ्री में अवेलेबल है। इसे अगर आपके कोई भी दोस्त है या रिलेटिव है, उनको सबको ये बात बता दो, ताकि हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाए। प्लीज आप लिंक शेयर कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम बता सकते हैं।
Yes, Mandar sir, you are co-host now. You can share your screen if you want. All the coordinators, please ask students to join. The break is over. And please put the info in the Telegram group also, coordinators. That session is resumed. And one more announcement for the students. That Shivangi ma'am is facing some internet issue. So that's why today she is not continuing. So Mr. Mandar Sonavne is continuing the session. Leadership with nobility. If you want to change the world. Change yourself first. मेरी जिंदगी तो ऑफ ट्रैक है. दिस इज द ओनली ट्रैक विच इज अवेलेबल फॉर मी. बाय बाय जिंदगी. बाय. बड़ी सोच का बड़ा जादू. घंटा बड़ा सोचो. माय फुट. सिचुएशन ऐसी है कि यहां से ही कूद जाओ. पक गया हूं यार. 25. Yes, student, this is our college riverside. We are having this scenario in our का college. कर्जा है यार. क्या करूं. भाई कुछ प्रॉब्लम है. 25 लाख का कर्जा है. देगा तू. देगा. ये लो. ये चेक. कोई बात नहीं. 1 साल बाद यही मिलना. फिर लौटा देना. यस. यस. इस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा, मगर 6 महीने में ऐसा करूंगा कि दुनिया बदल दूंगा. इतना डूबा ही हूं और मेहनत करूंगा. मेरी सब चीजें तो पानी में, मगर आज मेरा कॉन्फिडेंस आसमान में. मिलते हैं ब्रेक के बाद. $50 लाख का कर्जा है. तू देगा क्या. बोलना. देगा क्या. ये लो. भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह शिट, इसने तुम्हें भी चेक दिया. प्लीज ये चेक मत यूज करना. मेरा भाई पागल है. क्या भाई कुछ परेशानी है? 50 लाख का कर्जा है. तू देगा क्या अभी.
सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है। I am an Ermite student, not by chance but by choice. Behave like a winner. Act like a successful person. One day it has to be a reality. Do dare to read. How was that? Nice, sir. So groom some confidence. What? Yes, sir. What Yes, sir. decision? Yes, Yes, sir. taken. What decision? You have to take decision on the right time. Correct? Yes, sir. And you have to take decision according to the situation. Yes, sir. So there are two things we have to learn from this video. Anyone can explain? Don't give up. This is the first thing. And what was the second thing? Take every opportunity in the life. Don't let it go. So I think we are ready to start again. So Mr. Mandar, Okay. Sunal, Yeah, I'm connected. Yeah. So are the students back? Yes. Students is back and the remaining are coming, sir. Can start. Okay. So shall I wait or I should start right away? Vicky, sir, what is the status? Also, Professor Mayank, the screen sharing is disabled at my end. Can you please check that? Yes. So you are going to share or Mr. Mandar? It's me going to share this. Yes. Okay. I am Mandar only. This account is from Pranav. Okay. So yes, I have made you co-host. You can share. Yes, got it. Please confirm if the screen is visible, everyone. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So friends, अभी हम जो देखने वाले हैं आगे जो भी हम cover up करने वाले हैं, before we go ahead with that, I'll give you a quick recap of whatever has happened till now. ठीक है? एक quick recap दे देता हूँ 5-10 minutes का, and then we'll proceed ahead. Is it okay with everyone? ताकि कुछ लोगों का अगर कुछ miss out हो गया है, तो उनका cover up हो जाएगा. Yes, sir. So we are starting with Python programming, and Python programming is something जो हमको एक तरीका दिखा रहा है कि आप सिंपल तरीके से मशीन से अपने टास्क आसान कैसे करवा सकते हो. सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. हमारे ग्रुप में अभी जो लोग कनेक्टेड है आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. कोई सिविल है, कोई मैकेनिकल से है, कोई सीएस स्ट्रीम से है. तो हम सब लोग को एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि वाई आर एट द फर्स्ट प्लेस, कि हम प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं. तो इसके लिए मुझे दो लोगों से इंटरेक्ट करना है. कैन एनीवन प्लीज इंटरेक्ट विद मी वन? अभी एक, उसके बाद कोई और. कैन समवन प्लीज इंटरेक्ट विद मी quick? Yes, Akshita. Yes, sir. Who is this? Sir, Vedant. Yes, sir. Okay. So मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको, उस सवाल का जवाब दीजिए. अगर आपको 30 माले की बिल्डिंग चढ़नी है, 30 माले की बिल्डिंग चढ़ने के लिए आप स्टेयरकेस यूज करोगे कि एलिवेटर यूज करोगे, लिफ्ट यूज करोगे? एलिवेटर. क्यों? Why? क्योंकि सर एलिवेटर से ज्यादा फास्ट हम जा सकते हैं और एनर्जी भी बचती है. Okay. And anything else? Saving of time. हाँ, फास्ट होगा मतलब टाइम सेव होगा, राइट? दैट्स वन एंड द सेम. टाइम सेव हो गया या फिर फास्ट हो गया, इट्स वन एंड द सेम. नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमने जो बोझ अपने ऊपर था, जो हमको खुद चल के जाना था, वो किसी और पे दे दिया, राइट और रॉन्ग? यू डेलीगेटेड द वर्क.
आपको ऊपर ले जाने का काम आपने डेलीगेट किया किसी को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, क्योंकि ताकि आपको इतना स्टेयरकेस चढ़ना ना पड़े, आप थक ना जाओ, ज्यादा जल्दी पहुंचना भी है, एंड एफर्टलेस काम हो, ऑटोमेटिक काम हो, राइट और रॉन्ग। तो प्रोग्रामिंग गिव्स अस दिस पावर, प्रोग्रामिंग से ये पावर आ जाती है कि आप अपना काम किसी मशीन से मतलब किसी सॉफ्टवेयर से करवा सकते हो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स विदाउट रिक्वायरिंग मैनुअल एफर्ट्स। क्लियर है? अब मैं जो टेक्निकल चीजें कवर अप हुई है, अभी मैंने बताया कि हम क्यों कर रहे हैं ये, अब हम बताते हैं कि हम आगे क्या क्या दिख रहे हैं। तो एक एग्जांपल दूसरा जो मैं बता रहा था, दूसरे एग्जांपल के लिए मुझे किसी से इंटरेक्ट करना है। हु इज इट? कौन अवेलेबल है अभी? सेकंड एग्जांपल। ओके, सो मैं एक एग्जांपल जो बता रहा हूँ उसको इमेजिन करना है आपको। लेट्स से आपके पास बिस्लरी की पानी की बोतल जो आपने दुकान से खरीदी वो है, और उसमें अभी पानी है। हाउ विल यू एड्रेस दैट बॉटल? कैसे बुलाओगे उस बॉटल? किसी को बोलना है आपको कि वो बॉटल दे, तो क्या बॉटल करके मांगोगे आप उस बॉटल को? बॉटल पास ऑन करने के। हाँ, मतलब आप बोलोगे ना पानी बॉटल दो, एक्सक्यूज मी वो पानी बॉटल दो, ऐसा कुछ बोलोगे ना, किसी को मांगना है। हाँ, तो वो पानी, उसको पानी बॉटल क्यों बोला आपने? क्योंकि वो पानी का बॉटल। बिकॉज उसमें पानी है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो पानी आपने खत्म कर दिया, आपके घर में वो बॉटल रह गई, और उसमें ड्यू टू सम इमरजेंसी आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, आप वो बॉटल ले गए, उसमें पेट्रोल ले आए। अब उस बॉटल को क्या बोला जाएगा? पेट्रोल बॉटल। पेट्रोल बॉटल। करेक्ट। समझो आपने पेट्रोल डाल दिया, फिर धो के रख दिया, कुछ दिनों बाद घर में कुछ ऑयल पड़ा हुआ है, वो ऑयल उसमें भर दिया, अब उस बॉटल को क्या बोला जाएगा? ऑयल बॉटल। ऑयल बॉटल। अब देखो यहाँ पे इस एग्जांपल से मैं आपको पाइथन का एक फीचर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉटल वही है, बॉटल के अंदर का कंटेंट चेंज हुआ तो बॉटल का टाइप चेंज हुआ, राइट और रॉन्ग? यस यस सर। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए नाम का, ध्यान से देखिए, आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज कंफर्म। यस सर। मैं ए में लिख रहा हूँ 5। 5 मतलब मेरा पानी है, ए मतलब मेरा बॉटल है, अज्यूम करिए। तो ए में भी पानी है, दैट इज 5। 5 का टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। तो ए का टाइप क्या होगा? इंटीजर। करेक्ट। ए का टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। तो मैं टाइप ऑफ ए यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, और आप उसका आउटपुट देखिए। कैन यू सी दिस? व्हाट इज इट? इंटीजर। इंट। अब मैं इस ए को ऐसे ही रखता हूं, बस इसके अंदर की वैल्यू चेंज करता हूं, मतलब पानी की जगह अब मैं पेट्रोल भर रहा हूं, अज्यूम करो। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब ए का टाइप क्या आएगा? स्ट्रिंग। मतलब वेरिएबल ए वही है, उसके अंदर की हम वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ए का टाइप चेंज होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन इज कॉल्ड एज, पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। कैसी है पाइथन? इट्स अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब ये है कि आपको स्टैटिकली इंट ए लिखने की जरूरत नहीं है कोई भी इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। सिंपली ए इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू है वो असाइन करो, वैल्यू किस टाइप की है वो आपका इंटरप्रेटर एनालाइज करेगा और उस हिसाब से ए का टाइप डिसाइड कर लेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? अब मैंने ए इज इक्वल टू 5 करके प्रिंट ए किया, क्या आउटपुट आने वाला है इसका? 5 आएगा, इंटीजर नहीं। अब मैं टाइप नहीं प्रिंट कर रहा हूं, अब मैं ए प्रिंट कर रहा हूं डायरेक्टली, तो 5 आउटपुट आ गया। करेक्ट। अब मैं इस प्रोग्राम को 50 बार रन करूं, क्या मेरा आउटपुट चेंज होगा? नो। नो सर। बिकॉज व्हाई? Because you are again and again same input. आउटपुट तब चेंज होगा ना जब इनपुट चेंज होगा। हमारा इनपुट चेंज ही नहीं हो रहा है, 5 का 5 ही है, तो अगर इनपुट ही 5 है तो आउटपुट भी हमेशा 5 ही आएगा। तो व्हाट इज टू बी डन टू मेक श्योर कि आप इस प्रोग्राम को डायनेमिक करो? डायनेमिक मतलब वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है। तो देयर इज अ फंक्शन इन पाइथन कॉल्ड एज इनपुट। इनपुट। यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं एंटर योर वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू देनी है। Now if I run this program, every time you run the program, you can give some different value and you will see in the output that different value is printed. That means that value gets stored into that variable. देखिए पहले 56 था, अब 45 हो गया आउटपुट में। Yes, right. अब पाइथन का एक दूसरा फीचर यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। Try to understand that. मुझे जब प्रिंट करना होता है पाइथन में तो फंक्शन का नाम क्या है? Yes? प्रिंट। जो जब यूजर से इनपुट लेना है तो फंक्शन का नाम क्या है? इनपुट। इनपुट। मुझे जब किसी वेरिएबल का टाइप देखना हो तो फंक्शन का नाम क्या है? टाइप। तो यहाँ से
एक पाइथन का फीचर आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, whatever is the task you want to do, same will be the function name. इसलिए पाइथन को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो काम करना है वही फंक्शन का नाम रहेगा। आप में से कितने लोगों को जावा आती है? हर्ड ऑफ जावा, सुना है एटलीस्ट? मैं कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे, system.out.println। तो जिन लोगों को जावा है वो मुझे बताने की कोशिश करिए कि ये लाइन क्या करती है हमारे लिए। प्रिंट कर दिया सर। करेक्ट। तो ये कोड हम इसलिए लिखते हैं कि ताकि हम कुछ प्रिंट कर पाए। तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए आपको system.out.println लिखना पड़ता है। आप में से जिन लोगों को जावा आती है, क्या मुझे बता पाओगे सिस्टम क्या है, आउट क्या है? Why are we writing system? Why are we writing out? और ये सिंटेक्स क्यों ऐसा है system.out.println? सिर्फ println क्यों नहीं जावा में? या फिर ये है तो इसका मतलब समझाइए। पता है, याद है हमको कि system.out.println करना है, लेकिन सिस्टम क्या है, आउट क्या है, बहुत कम लोग बता पाएंगे, रेयरली। सर आप में जो से कोई सिस्टम है वो सिस्टम, और जो भी हम जो सिस्टम वर्क करें जो उसका बैकग्राउंड रहेगा वो आउट, जो अभी जो प्रोग्राम के अंदर लिखे उसका जो आउटपुट आएगा वो, और ये नहीं डॉट जो आई एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा क्लास है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा फंक्शन है? क्योंकि जावा में एक सिंटेक्स होता है, राइट? जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसर्न क्या होता है, आप क्लास में से java.lang पैकेज का एक क्लास है सिस्टम। System is a class and out is a variable. और आप वेरिएबल से फंक्शन यूज कर सकते हो, वेरिएबल से फंक्शन कॉल कर सकते हो ऐसे? कैन यू कॉल अ फंक्शन फ्रॉम अ वेरिएबल? तो यही दिक्कत है। प्रॉब्लम इज अब तक लोगों को प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट इसलिए लग रही थी कि काफी सिंटेक्स याद रखना पड़ता है, यू हैव टू मेमोराइज द सिंटेक्स। पाइथन ने क्या कर दिया, उसी पे हाथोड़ा मार दिया कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस बोलो टास्क क्या करना है, जो टास्क रहेगा वही फंक्शन का नाम रहेगा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन का नाम रहेगा, आप तुरंत लिखोगे प्रिंट। हाँ बोलो क्या प्रिंट करना है, हो गया? राइट और रॉन्ग? कंसेप्ट समझ में आ गई मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे? यस सर। अब बाय डिफॉल्ट पाइथन से जो कुछ भी इनपुट लिया जाता है वो स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट टाइप और ए करता हूं। तो द रीजन इज मैं यहां पे लिख रहा हूं मंदार, आउटपुट क्या आएगा, टाइप ऑफ ए, आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। मैंने रन किया वापस और यहाँ पे 56 वैल्यू दे दिया, आउटपुट क्या आएगा? यही बताने के लिए मैंने ये प्रोग्राम किया है कि अभी भी ये स्ट्रिंग ही देगा। द रीजन इज इनपुट फंक्शन को ये नहीं पता कि आप क्या इनपुट देने वाले हो। इनपुट फंक्शन कैसे अज्यूम करेगा कि आप इनपुट क्या देने वाले हो? तो देयर इज वन डेटा टाइप व्हिच कैन टेक एवरीथिंग एज इनपुट, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप नंबर स्टोर कर सकते हो, अल्फाबेटिकल नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड नंबर स्टोर कर सकते हो, डॉट स्टोर कर सकते हो। तो यू कैन टेक एनीथिंग एज इनपुट। सो बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर करता है स्ट्रिंग। बट इफ यू वांट कि ये स्ट्रिंग ना हो और ये इंटीजर होना चाहिए, तो ये किसकी रिक्वायरमेंट है कि वो इंटीजर होना चाहिए? ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो कोड किसको लिखना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा। सो वी विल राइट इंट इनपुट व्हिच विल मेक श्योर कि जो कुछ भी इनपुट लिया है वो अब इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका इवैल्यूएशन कुछ ऐसा होता है, मैं लिख रहा हूं 3 into 4 + 5। मुझे बताओ इसमें से कौन सा ब्रैकेट पहले इवैल्यूएट होगा? 4 + 5 मतलब अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला। बाहर वाला सर, बाहर। अरे अंदर वाला पहले होगा ना। अंदर वाला बाहर वाला कैसे होगा? पहले अंदर वाला पहले अंदर वाला होगा फिर बाहर वाला होगा। करेक्ट। तो 4 + 5 पहले होगा, 9 into 3 बाद में होगा। वेरी क्लियर एवरीवन? मैथमेटिक्स का सेम फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई होगा। जो हमने कोड लिखा हुआ है उसमें 2 ब्रैकेट्स है, एक इनपुट का ब्रैकेट है और एक इंट का ब्रैकेट है। तो पहले क्या होगा, इंटीजर में पहले कन्वर्ट होगा कि पहले यूजर से इनपुट लिया जाएगा? पहले यूजर से इनपुट लेंगे पहले। तो पहले यूजर से इनपुट लिया, जो कुछ भी आपने इनपुट लिया उसको इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अगर वो कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट होकर वो वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, अगर वो कन्वर्टेबल नहीं है तो वो एरर दे देगा। क्लियर? मतलब कि मैंने इसको रन किया, मैंने इंट इनपुट लिखा है और मैंने मंदार इनपुट दिया। कैन मंदार बी कन्वर्टेड टू इंटीजर? नो, इट विल गिव मी एन एरर। गॉट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। अब मैं इनपुट दे रहा हूं 56 या 45,
So it will take that value and tell that you have taken an integer value. क्लियर हो गया सबको ये पार्ट? यस चलो Yes, sir. वेरिएबल Yes, डिक्लेयर sir. करना क्लियर हो गया, यूजर से इनपुट लेना क्लियर हो गया, इनपुट किस टाइप में लेना है वो क्लियर हो गया। अगर int की जगह आपको फ्लोट लेना है तो यू कैन राइट फ्लोट ओवर हियर। तो आप फ्लोटिंग नंबर ले सकते हो, जैसे कि डेसिमल पॉइंट वाला 4.5 आ गया आउटपुट 4.5। अब इसका टाइप इंट नहीं रहेगा, इसका टाइप होगा अभी फ्लोट। I'll run it, I'll give 4.5 and see the class is float. Clear है everyone? एकदम स्प्राइट की तरह क्लियर है? यस Good. Now Yes, moving sir. ahead. Clear. Sorry? की तरह क्लियर है सर, एकदम परफेक्ट बताया आपने। थैंक यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं बस एक रिवीजन दे रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, ठीक है? आगे के कंसेप्ट हम स्लो ले लेंगे। नाउ अब एक हमने टास्क किया कि यूजर से कोई नंबर इनपुट लेना है, तो 2 नंबर इनपुट ले लिया हमने यूजर से। अब मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है, तो एडिशन के लिए मैंने सी नाम का वेरिएबल लिया और a प्लस बी लिख दिया। एडिशन होगी कि नहीं होगी? अब मुझे इनकी एडिशन होगा सर, होगा करने के लिए राइट, मुझे एडिशन प्रिंट करने के लिए ऐसा कुछ मैसेज देना है, एडिशन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। तो मैं लिख रहा हूं एडिशन ऑफ कॉमा ए, फिर कॉमा एंड, फिर कॉमा बी। सो एडिशन ऑफ ए एंड बी, फिर मैंने लिखा इज एंड मैंने लिखा सी। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? मैंने लिखा 5 एंड 7। व्हाट शुड बी द आउटपुट? आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? 12 मुझे आउटपुट में जो पूरा स्टेटमेंट आने वाला है वो बताइए। Addition of 5 Addition of 5 and 7 is Correct. 5 and 7 is 12. राइट, सो ये हमारा आउटपुट आ गया, एडिशन ऑफ 5 एंड 7 इज 12। अब ये मैसेज जो है ये डायनेमिक मैसेज है। डायनेमिक मतलब जो नंबर आपने यूजर से इनपुट लिया होगा वही नंबर मैसेज में प्रिंट होगा। जैसे कि मैंने अभी 10 और 12 ले लिया, तो अब हमारा मैसेज होगा एडिशन ऑफ 10 एंड 12 इज 22। एंड व्हाई इज दिस पॉसिबल? बिकॉज यहाँ पे आपने वेरिएबल्स प्रिंट करे हैं, ना कि मैसेज। अगर ये ऐसा होता, मैं इसकी जगह यहाँ पे ए एंड बी होता, तो यहाँ पे मैसेज में नंबर नहीं आते, ए एंड बी लिख के आता, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने 5 और 6 लिखा, आउटपुट में आ रहा है एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 11। तो ए एंड बी में क्या स्टोर हुआ है पता नहीं चल रहा है, सिर्फ ए और बी लिख के आ रहा है। दैट्स द रीजन हमने मैसेज को डायनेमिक किया था इन दिस वे। तो एडिशन ऑफ, ये एक स्ट्रिंग हो गया, कॉमा ये वेरिएबल हो गया, फिर दूसरा एक स्ट्रिंग आ गया, फिर कॉमा एक वेरिएबल आ गया, फिर दूसरा एक स्ट्रिंग आ गया, कॉमा एक वेरिएबल आ गया। तो आपका मैसेज जैसे आपको प्रिंट होना है उसी सीक्वेंस में आप मैसेज को बनाओगे टुकड़ों में। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। मैं जिस तरीके से एडिशन कर सकता हूँ, क्या मैं बाकी चीजें भी कर सकता हूँ? मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन? Yes, sir. यस Yes, sir. So I'll just right now do a small task for you all. मैं लिख रहा हूँ C is equal to A plus B, D is equal to A minus B, E is equal to A into B, F is equal to A divided by B. तो 4 वेरिएबल्स आ गए मुझे 4 ऑपरेशंस के लिए, करेक्ट? तो सब्ट्रैक्शन में मैं लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन मैंने D में स्टोर किया है, मल्टीप्लिकेशन मैंने E में स्टोर किया है, एंड डिवीजन मैंने F में स्टोर किया है, एंड आई रन दिस कोड। अब आप जो नंबर्स इनपुट दे रहे हो 25 एंड 5, इनकी वो सारी ऑपरेशंस आ जाएगी। एडिशन ऑफ 25 एंड 5 इज 30, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 एंड 5 इज 125, सब्ट्रैक्शन ऑफ 25 एंड 5 इज 20, डिवीजन ऑफ 25 एंड 5 इज 5.0। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने लायक है, इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है। पॉइंट नंबर लास्ट देखो, लास्ट पॉइंट में आउटपुट जो आया है, इस आउटपुट का जो लास्ट वेरिएबल है एफ का डेटा टाइप क्या लगता है आपको, क्या आएगा? फ्लोट के फॉर्म में फ्लोट आएगा, फ्लोट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सबका इंटीजर आया, लेकिन डिवीजन का फ्लोट आया। द रीजन इज डिवीजन ऑपरेशन को नहीं पता है कि आपने जो इंटीजर नंबर्स दिए हैं डिवीजन के लिए, उनका आउटपुट एक कंप्लीट नंबर आता है कि फ्रैक्शनल नंबर आता है। आप ऐसा भी कर सकते हो ना, 5 और 2 इनपुट किया, 5 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? 2.5। तो 2.5 तो इंटीजर नहीं हो सकता, राइट और रॉन्ग?
इसलिए Yes. डिवीजन बाय डिफॉल्ट आपके भले ही इंटीजर नंबर आपने इनपुट दिए हो डिवीजन में, इट विल गिव यू द आउटपुट एज फ्लोट वैल्यू बाय डिफॉल्ट. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब सवाल Sir. ये है कि समझो मैंने 5 और 2 का डिवीजन करना है, 5 और 2 का डिवीजन करना है, लेकिन मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, डेसिमल पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए. So we can add int of f. अभी जो 2.5 आ रहा है वो 2.5 नहीं 2 आना चाहिए. तो आप कह रहे हो कि मैं इस f को int में लिखूं, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे Yes, हो? sir. Yes. Yes, sir. So Yes. in f equal to 8 divide by if we add twice it will Exactly. become This is what the reason I am explaining this point. पाइथन में एक ऑपरेटर है विच इज डबल डिवीजन ऑपरेटर. ये ऑपरेटर मेक श्योर करता है कि आपकी जो वैल्यू हो वो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न आए. That means if 5 divided by 2 is done and we get the value as 2.5 in normal division, this double slash operator will ignore the dot and the 5 value after that and it will keep only 2 as the output. तो आपको int में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है. Only double slash operator instead of division operator. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. Now going ahead, हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं इन अ रियल टाइम एप्लीकेशन. मतलब अभी तक जो देखा इसका प्लस एक कंसेप्ट सीखने के लिए रियल टाइम एप्लीकेशन करते हैं. समझ लो मैंने किसी को बर्थ ईयर इनपुट पूछना है. आई एम आस्किंग बर्थ ईयर एज इनपुट. तो मैंने by नाम का वेरिएबल ले लिया एंड करंट अंडरस्कोर ईयर इज इक्वल टू 2021 लिख दिया. ठीक है. तो करंट ईयर का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. बर्थ ईयर का भी इंटीजर. अब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं. एज इज इक्वल टू दैट इज करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर. मुझे एज मिल जाएगी. अब मुझे चेक करना है वेदर दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट. तो मैंने लिखा इफ एज इज लेस देन 18 कोलन इंडेंटेशन. अब ये जो इंडेंटेशन है इसका बहुत ध्यान से देखिए. अगर मैं कोलन नहीं देता एंटर प्रेस करता हूं और अगर मैं कोलन के एंटर प्रेस करता हूं तो क्या फर्क होगा? मैं अगर कोलन नहीं देता हूं और एंटर प्रेस करके लिखता हूं प्रिंट Sir, you are not audible. आपने इसके बाद कोलन नहीं दिया. सो दिस इज अ सिंटैक्स इन पाइथन. द इतर अदर लैंग्वेजेस जहां पे आपके कर्ली ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं द ब्लॉक बिगिनिंग एंड ब्लॉक एंड, यहाँ पे कोलन इंडिकेट करता है द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक एंड डिडेंटेशन इंडिकेट करता है एंड ऑफ द ब्लॉक. मतलब जहां पे आप डिडेंट करोगे वहां पे ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा. तो यहाँ आपने एल्स लिखा तो ये इफ ब्लॉक खत्म हो गया. इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम. मैंने इसको रन किया. एंटर योर बर्थ ईयर. आई रोट 1989 बेस्ड ऑन द करंट ईयर. दिस इज द मैसेज. मैंने इसको रन किया. मैंने बर्थ ईयर इनपुट दिया 2007. मैसेज आया नॉट एलिजिबल. इज इट क्लियर एवरीवन? इसको Yes, sir. कहते हैं Yes, sir. Yes, sir. कंडीशनल स्टेटमेंट्स. मतलब का क्या होता है? दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. कंट्रोल फ्लो मतलब these instructions or these statements control the flow of your project. कंट्रोल द फ्लो मतलब ये प्रिंट करना है कि ये प्रिंट करना है, ये कंट्रोल करता है ये डिसीजन, ये स्टेटमेंट. इसलिए इनको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स भी कहते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं. क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एलिजिबल नॉट एलिजिबल. इसलिए इफ से काम चल गया. अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूं. एंटर योर नंबर लिख देता हूं, जस्ट नंबर. और टास्क इज यू हैव टू चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. जीरो क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जीरो कोई बताएगा? So it's non-negative, non-positive. इट्स नाइदर नेगेटिव Neither positive. और पॉजिटिव. तो इस केस में हम जीरो को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल सकते. तो यहाँ पे तीन सिचुएशंस आ गई, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा. करेक्ट? तो इस केस को इफ एल्स से नहीं मैनेज कर पाएंगे. सो देयर इज अ प्रोविजन इन पाइथन कि आप मल्टीपल इफ यूज कर पाओ. तो यू कैन राइट इफ नम. पहले केस में मैंने लिखा इफ नम इज इक्वल टू जीरो. तो मैसेज क्या आएगा? जीरो.
इट्स अ 0. इफ num is less than 0 तो मैसेज क्या आएगा? माइनस नेगेटिव नेगेटिव. It is a negative. इफ तो मैसेज क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव. अब मैं इसको रन करता हूं, देखते हैं कि कुछ गलत आता है क्या. मैंने 5 दिया, इट्स पॉजिटिव आया. मैंने रन किया, मैंने 0 दिया, इट्स 0 आया. मैंने इसको रन किया, -1 दिया, इट्स नेगेटिव आया. सही दे रहा है आउटपुट? कुछ गलत है आउटपुट में? नो सर. नहीं. लेकिन ये प्रोग्राम सही नहीं है. आउटपुट सही आ रहा है लेकिन ये प्रोग्राम सही नहीं. अब सही नहीं है. Sir, we can use else if statement. Correct. If statement. Elif. So let me explain कि why this is not correct program. Why am I saying Elif this is not a statement. correct program? The concern is जो हमारा नंबर है उस नंबर को यहाँ पे कंपेयर हुआ. इसको कंपेयर होने के बाद वो पता चला कि वो 0 है, तो ये प्रिंट हो गया. जब ये प्रिंट हो गया तो क्या हमको वापस ये चेक करने की जरूरत है क्या कि ये नंबर 0 से लेस देन है क्या, कि नंबर ग्रेटर देन 0 से है क्या? क्या वापस ये चेक करने की जरूरत है? नहीं. ऑब्वियसली नहीं है. तो अभी का प्रोग्राम वैसे वर्क कर रहा है. In spite of first condition getting true, it will still check the conditions for the further possibilities. तो वो ना हो या फिर प्रोग्राम का टाइम वेस्ट ना हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, इसलिए we can use elif. अब एक और चीज है, अगर आपके पास 3 ही कंडीशंस है और पहली 2 कंडीशंस ऑलरेडी चेक हुई है, तो लास्ट में वापस कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली यूज else over. So this will again further reduce the time complexity कि कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एल्स वाला एग्जीक्यूट करो. अब इसका आउटपुट देखते हैं, कुछ गलत आता है क्या. 5 को इट्स पॉजिटिव आया, -1 को इट्स नेगेटिव आ रहा है, और 0 को 0 आ रहा है. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. मल्टीपल एक के नीचे एक कंडीशंस है, तो इफ यूज करोगे कि इफ एलिफ यूज करना प्रेफर करोगे? टेल मी. इफ एलिफ. रीजन क्या है? क्या रीजन है? करने का Time complexity. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है प्रोग्राम का. समझ में आ गया है सबको इफ एलिफ वगैरह? यहाँ तक हो गया था. अब आगे बढ़े, लूप्स का स्टार्ट करें. यस सर. Yes, sir. अभी देखो मैं ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ. इस प्रोग्राम को रन किया, इस प्रोग्राम ने मुझसे नंबर इनपुट पूछा 5, मैंने रन किया, आउटपुट आ गया. अब मुझे वापस अगर नंबर इनपुट देना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? वापस प्रोग्राम रन करना पड़ रहा है. Yes, बिना प्रोग्राम रन किए वापस क्या मैं नंबर इनपुट दे सकता हूँ? नहीं दे सकता. मुझे प्रोग्राम वापस रन करना ही पड़ेगा. No, sir. तो अगर मैं बार बार प्रोग्राम रन कर रहा हूँ टू अचीव समथिंग, कोई सेम चीज बार बार अचीव करने के लिए बार बार प्रोग्राम रन करना पड़ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं एक काम कर सकता हूँ. समझो मुझे 3 बार करना है, 3 बार कॉपी पेस्ट कर लिया. मुझे समझो 3 नंबर यूजर इनपुट लेके चेक करने थे, तो मैंने लिखा 5, आउटपुट आ गया, वापस नंबर पूछ रहा है. मैंने दिया 6, आउटपुट आ गया, वापस नंबर पूछ रहा है. 8 आ गया आउटपुट. लेकिन मुझे अगर ऐसे 100 नंबर्स का पूछना हो, 100 बार नंबर पूछना हो यूजर को, तो क्या मैं 100 बार कोड कॉपी पेस्ट करूंगा? नहीं. Make it choice driven. यस. तो ये कोड बार बार कॉपी पेस्ट करने से 7 लाइन का कोड अगर मुझे 100 बार लिखना है तो 700 लाइंस का कोड हो जाएगा. तो बेहतर है कि मैं इसको पीस ऑफ कोड दैट यू वांट टू रिपीट, मैं इसको लूप में डाल दूं. ठीक है. अब लूप कंसेप्ट क्या है यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा. लूप इज समथिंग दैट इज रिपीटिंग द एग्जीक्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. अब ये टाइम पीरियड किसके बेसिस पे डिसाइड होता है ये बताता हूं मैं आपको. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद द फॉर लूप. तो समझ लो हम यूजर को पूछते हैं कि आपको कितने नंबर्स का चेक करना है. तो मैंने n इज इक्वल टू इंट इनपुट किया, हाउ मेनी टाइम्स टू एग्जीक्यूट द कोड. क्या सवाल पूछा है मैंने? कोड को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है. अब जब मैंने ये पूछ लिया है कि कितनी बार एग्जीक्यूट किया है और वो करना है और वो n में स्टोर है, मतलब टोटल काउंट विल बी स्टोर्ड इन विच वेरिएबल? n वेरिएबल. अब मैं नीचे वाला ये जो कोड है, इस कोड को एक स्ट्रक्चर के अंदर डालूंगा, दैट इज फॉर i इन रेंज ऑफ n. अब मैं ये पूरा का पूरा समझाने वाला हूं आपको. गिव मी 2 मिनट्स. ठीक है. तो ये फॉर i इन रेंज ऑफ n का मतलब क्या है? तो ये रेंज फंक्शन जो है हमारे लिए 3 काम करता है.
तीन काम क्या, इट विल स्टार्ट द वैल्यू ऑफ आई बाय डिफॉल्ट फ्रॉम 0। रेंज फंक्शन क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आई की वैल्यू किससे स्टार्ट करेगा, 0। तो शुरू में जब हम फॉर लूप में जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तब हमारे आई की वैल्यू बन जाती है 0। और when you have given n over here, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम n को अभी फिलहाल के लिए 4 एज्यूम कर लेते हैं। तो इफ माई n is 4 and my i is starting from 0, तो 4 बार एग्जीक्यूट करने के लिए मेरी i की वैल्यू कहां तक जानी पड़ेगी, तो i is equal to 0, i is equal to 1, i is equal to 2, i is equal to 3, हो गए 4 बार। I is greater than equal to 4. नहीं, ध्यान से सुनो, मुझे अगर 4 बार एग्जीक्यूट करना है तो मेरे i की वैल्यू कहां तक जानी चाहिए, इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, i is equal to 0, 1, 2, 3, 4 काउंट हो गए, तो मैं 3 तक आ गया। दैट मींस माय i वैल्यू विल बी लेस देन n, लेस देन 4। तो 3 इज लेस देन 4, यहां तक कंडीशन ट्रू हो जाती है। गॉट इट? तो लेस देन 4 का मतलब है n-1 तक ही जाएगा वो, मतलब condition is for n-1, and last is every time your I value will increment by 1। ये तीनों चीजें हमारे लिए कौन कर रहा है, ये रेंज फंक्शन कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। ये तीनों चीजें रेंज फंक्शन हमारे लिए कर रहा है। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने, ये आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट आई। Sir, can we use I plus plus instead of I plus 1? नहीं, i+1 कहाँ लिखा है हमने, ये तो मैं कमेंट है, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। i++ i-, ऑपरेटर्स पाइथन में नहीं है, दोस हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम पाइथन। और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट कर रहा है, मैंने कमेंट में लिख के एक्सप्लेनेशन के लिए वो कोड लिखा था आगे। दैट इज नॉट द कोड टू बी रिटन, ठीक है। प्रिंट आई नंबर, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम ith नंबर इनपुट ले रहे हैं। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ ना, हाउ मेनी टाइम्स टू एग्जीक्यूट द कोड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4। सो 0th नंबर, मतलब जो पहला नंबर आप देना चाहते हो, मैंने लिखा 5 यहाँ पे, इट्स पॉजिटिव। देन 1th नंबर आया यहाँ पे 1, तो आई की वैल्यू पहले क्या थी, फर्स्ट टाइम में 0, बाद में कितनी हुई, 1 हुई। क्या हमने चेंज करा 0 से 1? नहीं, किसने किया फिर, रेंज फंक्शन। सो रेंज फंक्शन इज टेकिंग केयर ऑफ दीज 3 एक्टिविटीज। आई 0 था, 0 से 1 इंक्रीमेंट हुआ, 1 से चेक किया उसने कि वो n-1 तो नहीं है, n-1 नहीं है, इसलिए लूप में रहा। जब वो n-1 बन जाएगा, उसके बाद वो एग्जिट हो जाएगा। तो मैं दूसरा नंबर देता हूँ 67, इट इज पॉजिटिव। मैं तीसरा नंबर देता हूँ -9, इट इज नेगेटिव। अब मैं 3 पे आ गया हूँ, 3 पे आने के बाद मैंने उसको 0 दे दिया, इट 0 आया और प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो गया। क्या वो आगे पूछ रहा है हमको एंटर द नंबर? नहीं पूछ रहा है, बिकॉज 0, 1, 2, 3 4 बार हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, यस। अब ये था बेसिक वर्जन ऑफ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन के 3 वेरिएशंस हैं। फर्स्ट वेरिएशन, आप सिर्फ n जब पास कर रहे हो, मतलब कोई एक नंबर पास कर रहे हो, दैट इज टेकन एज द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट। अगर मैं 1, n दे रहा हूं, दैट इज कंसिडर्ड एज स्टार्टिंग नंबर, मतलब i की वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रही थी, अब 0 से ना स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होगी। लेकिन आप स्टार्ट कहीं से भी करो, एंड में कोई चेंज नहीं होगा, एंड विल रीच टिल n-1 ओनली। तो मुझे बताओ, अगर मैं n इज इक्वल टू 4 ले रहा हूं और 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा लूप? 3 टाइम्स, बिकॉज 1, 2 एंड 3। बिकॉज n की वैल्यू अगर 4 है तो n-1 तक ही वो जाने वाला है। तो मैं इसको रन करता हूं, मैंने 4 दे दिया। अब ये पूछ रहा है 1th नंबर, बिकॉज मेरा फॉर लूप 1 से स्टार्ट किया है मैंने, तो 1th नंबर पूछ रहा है, मैंने दिया 3। फिर ये 2nd नंबर पूछ रहा है, मैंने दिया -8। फिर ये 3rd नंबर पूछ रहा है, दिया 0। उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये 3 बार एग्जीक्यूट हुआ इन स्पाइट ऑफ n हैविंग 4, बिकॉज हमने स्टार्ट 1 से किया था। और अगर आप कॉमा देके एक और नंबर देते हो, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि आप कितने से आगे इंक्रीमेंट करना चाहते हो। मतलब i इज इक्वल टू i+1 करना चाहते हो, यहाँ पे 2 दिया तो i इज इक्वल टू i+2 होगा, यहाँ पे 3 दिया तो i इज इक्वल टू i+3 होगा। तो आप इंक्रीमेंट कितने नंबर से करना चाहते हो, स्टेपिंग कितने नंबर से करना चाहते हो, वो हम 3rd नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर 3rd नंबर नहीं दिया तो ये 2 नंबर ही लेगा। अगर दोनों नंबर नहीं देने, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करना है, तो सिर्फ n नंबर दे दो। तो कितना इजी हो गया पाइथन में फॉर लूप। कुछ भी याद रखना है कि आई कब इंक्रीमेंट करना है, कब डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या ऑपरेटर लिखना है, कुछ भी याद रखना है क्या आपको?
नो सर। फॉर आई इन रेंज ऑफ n हमारा नंबर पास हो गया और ये हम वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. पक्का? यस सर। मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, 12 दिया, माइनस 2 दिया, 0 दिया, हो गया एग्जीक्यूट। समझ में आ गया सबको? फॉर लूप, फॉर लूप की 3 वेरिएशन भी समझ में आ गए। अब ये प्रोग्राम अब ये प्रोग्राम जो अभी आपको मैं टास्क दे रहा हूँ वो टास्क कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो इस टास्क को। आपको यूजर से टेक नंबर ऑफ पीपल टू चेक फॉर एलिजिबिलिटी, टेक नंबर ऑफ पीपल टू चेक फॉर एलिजिबिलिटी, मतलब यूजर को पूछो कितने लोगों की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, और फॉर लूप लगा के फॉर लूप के अंदर उतने लोगों के लिए एज का जो प्रोग्राम किया था ना आपने, एज चेक करके एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, वो वाला प्रोग्राम आपको फॉर लूप में करना है। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, कंप्लीट करो, क्विक, जल्दी करो ये। आज समझ में आ गया है क्या करना है आपको? स्टूडेंट्स, टास्क समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। यस सर। हरी अप, क्विक। while loop or for loop? हमने अभी व्हाइल लूप सीखा ही नहीं है, सो गो अहेड विद फॉर लूप ओनली। जितना हमने सीखा है सिर्फ उसका ही यूज करो, व्हाइल। इसके बाद मैं व्हाइल लूप सिखाने वाला हूँ।
Done? Hello? Is it done? Hello? Done, sir. Okay. Now, we will see a while loop and a small difference between for loop and while loop so that you all can understand कब for loop use करना है, कब while loop use करना है. Is it clear? तो बढ़ते हैं आगे. अब ये जो प्रोग्राम है कि how many times to execute, ये हमको प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कराने के लिए हेल्प कर रहा है. प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब क्या? फॉर लूप एग्जीक्यूट होने से पहले हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट और रॉन्ग. समझो n में हमने 3 दे दिया तो हमको ये पता है कि ये फॉर लूप 3 बार चलने वाला है. तो अब हम इसको कस्टम बनाते हैं. कस्टम एज इन यूजर चॉइस के बेसिस पे हम बताते हैं. तो चॉइस इज इक्वल टू, मैंने शुरू में लिख दिया यस एंड मैंने लिखा व्हाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू नो. तो जब तक मेरा चॉइस नो नहीं होता तब तक मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा. बट इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त I'll have to make sure that I every time take the user input for the choice. मतलब मैं चॉइस बार बार उसको पूछना जरूरी है. डू यू वांट टू कंटिन्यू. अब मैं इसको रन कर रहा हूं. एंटर योर नंबर. ओ सॉरी, हाँ हम अंदर आ गए, व्हाइल लूप के अंदर आ गए. व्हाइल लूप के अंदर आने के लिए रीजन क्या है? अभी ये वाला आउटपुट आया ना हमारे यहाँ पे, एंटर योर नंबर. तो इसका रीजन क्या है कि हम इसके अंदर आए, हमारा चॉइस की वैल्यू यस को इनिशियलाइज किया हमने और बोल रहे जब तक कि चॉइस नो नहीं बन जाता तब तक इसको एग्जीक्यूट करना है. तो अब हम अंदर आ गए, मैंने नंबर दिया 0, उसने चेक किया इट्स अ 0. डू यू वांट टू कंटिन्यू. मैं लिख रहा हूँ यस. अगर मैं यस लिख रहा हूँ तो वापस यहाँ पे आ गया वो. आफ्टर दिस क्वेश्चन चॉइस में जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पे आ गई. चॉइस में मिला यस, यस इज नॉट इक्वल टू नो, ट्रू हो गया. हम अंदर आ गए वापस. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो. अगर मैं नो लिख रहा हूँ अभी, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मैंने नंबर की जगह नो लिख दिया. इट वाज आस्किंग मी फॉर अ नंबर ना, सो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया. इट्स पॉजिटिव. डू यू वांट टू कंटिन्यू. मैं लिख रहा हूँ यस. फिर मैंने नंबर दिया 6. इट इज आस्किंग डू यू वांट टू कंटिन्यू. मैंने लिखा नो. तो जब मैंने नो लिख दिया तो व्हाइल लूप स्टॉप हो गया. अब मुझे बताओ ये व्हाइल लूप ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स कि जब यूजर नो बोलेगा तब स्टॉप होगा. जब यूजर नो बोलेगा तब स्टॉप. तो यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दे दिया है. whenever you want to execute a particular thing n number of times, a predefined number of times, always prefer a for loop over there. And whenever you want to execute something based on the user choice, user input, then you should prefer while loop. अब बहुत लोगों को सवाल आएगा कि for loop भी तो हम यूजर के चॉइस पे चेंज कर सकते हैं. आएगा ना दिमाग में डाउट. तो एग्जीक्यूट करके देखिए वो. एक बार एग्जीक्यूट करते हैं. तो मैंने लिखा यहाँ पे चॉइस इज इक्वल टू 0, समझो, और फॉर चॉइस इन रेंज ऑफ 5. तो ये रेंज, ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा बाय डिफॉल्ट? 5 टाइम्स. तो मैंने यहाँ पे चॉइस टाइम एग्जीक्यूशन इटरेशन ये प्रिंट किया और मैंने चॉइस इनपुट लिया यूजर से वापस. चॉइस इज इक्वल टू इनपुट एंटर द चॉइस. अब मैं इसको इंट इनपुट करना जरूरी है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू से हम कंट्रोल कर रहे हैं. तो ऊपर वाला कोड मैं कमेंट कर देता हूँ. मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास है. मैं ये वाला कोड पूरा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है. एंड आई एग्जीक्यूट ओनली दिस मच कोड, ये वाला कोड. तो देखो फॉर चॉइस को मैंने 0 को इनिशियलाइज किया है. फॉर चॉइस इन रेंज ऑफ 5 बोला है. प्रिंट चॉइस टाइम इटरेशन और एंटर द चॉइस. एंटर द चॉइस मतलब एंटर द नंबर बोला है. तो मैंने इसको रन किया. कौन से नंबर पे इटरेशन है हमारा? 0 नंबर पे. एंटर द नंबर मैंने लिखा 5. मतलब क्या है, मेरे चॉइस की वैल्यू क्या होनी चाहिए अभी? ये एंटर द नंबर क्या कर रहा है? किसमें वैल्यू चेंज कर रहा है? किसकी वैल्यू चेंज कर रहा है? चॉइस की.
तो एंटर नंबर में मैंने जो 5 दिया वो 5 किस में स्टोर हो जाएगा, चॉइस में। तो 5 अगर चॉइस में स्टोर हो जाएगा तो चॉइस की वैल्यू 5 हो जानी चाहिए, और अगर चॉइस की वैल्यू 5 हो जाती है तो क्या ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए आगे इसके बाद? नहीं होना चाहिए ऐसा हमारा मानना है, लेकिन यहाँ पे तो चल रहा है आगे, और चॉइस की वैल्यू 1 आ गई, 5 लिया ही नहीं उसने। सर इस टाइम सिर्फ लोग 5 टाइम्स चलेगा, आप चॉइस कुछ भी डाल सकते हैं। करेक्ट, तो यूजर से इनपुट लेके आप चॉइस में कुछ भी रखो, इट विल नॉट चेंज द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ दिस फॉर लूप। तो फॉर लूप को हम मैन्युअली कंट्रोल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं। भले आपने मैन्युअली यहाँ पे चॉइस की वैल्यू चेंज करी हो, चॉइस को आप आई भी लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी यू टेक चॉइस, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पे। फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 और आई की वैल्यू मैंने इन बिटवीन चेंज कर दी यहाँ पे। तो even if you change the value in between, it will execute those number of times which are mentioned over here. तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो भी ये 5 बार ही एग्जीक्यूट कर लेगा और फिर ही एग्जिट होगा। तो मैन्युअली कंट्रोल एनी लूप एग्जीक्यूशन, which loop to be preferred? While loop. Predefined number of times any loop to be controlled, which loop to be preferred? For loop. For. अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग का तो देख लिया कि स्ट्रिंग का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। चॉइस अगर न्यूमेरिक है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इफ आप 0 और 1 डिफाइन कर लो कि अगर 1 हुआ तो एग्जिट करना है, 0 रहा तो कंटिन्यू करना है, तो हम इसको रन कर सकते हैं। तो नॉट नेसेसरी इट हैज टू बी, ये क्या हो गया, code was supposed to be commented, मैंने रन किया, एंटर द नंबर, ये नंबर पूछ रहा है, ये वाला नंबर, ठीक है। तो मैंने दिया 9, इट इज शोइंग इट्स पॉजिटिव, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो 0 इज टू कंटिन्यू, तो मैंने 0 इनपुट दिया, एंटर योर नंबर आया वापस 6 दिया। अब मैंने 1 दिया, 1 इज टू एग्जिट, ये एग्जिट हो गया। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया है डिफरेंस फॉर लूप और व्हाइल लूप का सबको? Yes, sir. So that's all for today. आज का हमारा सेक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। I hope you all have enjoyed the way we have explained you. कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, क्यूए सेशन अभी हम ले लेते हैं 2-5 मिनट का, and then we will end the session. Yes, no, actually one more announcement. Our campus director and founder trustee Dr. LS Bothra sir want to interact with you all guys. So please keep in the meeting. Till now sir will discuss the doubts. So I am calling him and I will inform when we will speak. Okay. Thank you, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, you continue with the doubts. So I am calling our sure founder trustee. Okay. So yes, students, कुछ क्वेरीज हैं अब तक के आज के सेशन में? वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, यूजर से इनपुट कैसे लेना है, प्रिंट कैसे करना है, इफ एल्स कैसे वर्क होता है, इफ एलिफ एल्स कैसे वर्क होता है, इफ क्यू यूज नहीं करना है, इफ एलिफ यूज क्यू करना है, फिर फॉर लूप कैसे वर्क होता है, व्हाइल कैसे वर्क होता है, क्वेरीज है, प्लीज आस्क मी द क्वेरीज। कम ऑन सर, वन बाय वन एक एक करके। हेलो सर। हाँ सर, वो लास्ट का कोड वापस से एक बार रिपीट करें आप। ये वाला सर, लास्ट का कोड एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए। हाँ सर, वो फॉर लूप का आपने जो किया ना चॉइस बेस्ड, वो थोड़ा सा एक बार वापस से रिपीट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सी फॉर लूप जो है वो चॉइस बेस्ड वर्क होता ही नहीं है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो वो प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 0 फॉर i इन रेंज ऑफ 5 एंड i इज इक्वल टू इंट इनपुट किया। तो मैं अगर बाय डिफॉल्ट i इन रेंज ऑफ 5 बोल रहा हूं तो फॉर लूप आइडियली कितनी बार चलना चाहिए? 5 बार चलना चाहिए। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पहली बार जब हम फॉर लूप में आए, जब i की वैल्यू 0 है और वापस मैंने i इंट एंटर द नंबर किया और i की वैल्यू 5 कर दी, पहली बार में i की वैल्यू अगर 5 कर दी तो i की वैल्यू जब 5 हो गई है, शुड दिस फॉर लूप एग्जीक्यूट? इट शुड नॉट एग्जीक्यूट। लेकिन ये तब पॉसिबल होता अगर i की वैल्यू मैन्युअली इनपुट देने से कंट्रोल होती। तो फॉर लूप में वो कंट्रोल नहीं होती है, ये दिखाने के लिए मैंने ये आपको दिखाया कि भले ही मैंने i इज इक्वल टू इंट इनपुट 5 लिया हो, फिर भी i की वैल्यू 1 ही आ रही है नेक्स्ट इटरेशन में। ध्यान से देखो, i की वैल्यू पहले कितनी है? पहले इटरेशन में 0, मैंने i की वैल्यू 4 कर दी। अब i की वैल्यू 4 हो गई है तो प्रिंट में यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 4 टाइम इटरेशन आना चाहिए था ना।
नेक्स्ट में, इसके बाद वाले में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कि 1 आ रहा है? यस 1 आ रहा है। तो आपके मैनुअल इनपुट देने से इस वाले इटरेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो 0 था, 0 का 1 हो गया, इन स्पाइट ऑफ यू गेव 4 ओवर हियर। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये कोड करना नहीं है, ऐसा मैं बता रहा था। इस तरीके का कोड करना नहीं होता है। So Yes, for sir. loop should be executed based on the primary predefined number of times and not based on the user choice. Is it clear now, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir, our founder, trustee, and campus director, sir, Dr. Bothra, sir, has joined the meeting. Okay. So I would like to welcome Dr. Lavendra S. Bothra, sir. Please guide us and motivate us. Over to you, sir. Okay, thank you, Mayank Mangal. And session is going really great. And I'm thankful to the instructor also. He's taking a lot of pains and basically is going through all fundamentals. So, and students are taking interest. Namaskar, मित्रांनो. मी Dr. Bothra बोलतोय. I am Dr. Bothra from Armite College. I am the founder trustee and chairman and campus director of the college. I just want to share my experience that how average person can top in life. तो एक 4-5 फॉर्मूले मैंने बनाए हैं एंड आई थिंक सबको रिक्वेस्ट है कि ये इंटरेक्टिव सेशन रखिए, पार्टिसिपेंट्स अपना यस नो में जवाब दीजिए। किसको किसको कैश कमाना है लाइफ में? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अर्न कैश इन लाइफ? यस Yes, sir. Yes, those who want to earn cash in life, just keep this formula. If you have any mechanism to store these formulas, you please store these formulas. These formulas will help you in your life throughout. Because I also started my journey from as a 1,000 rupees salary, but now I am a owner of the college, so I want to secret the formula, share the formula with you all. I think if you can write it down or jot it down in your mobile, it will be a great help to you to flow in your life. So अगर आपको कैश कमाना है तो आपको पहला फार्मूला रखना है दिमाग में, KASH। CASH को कमाने के लिए आपको KASH का जरूरत है। So what is K? K stands for knowledge with practicals. हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग थ्योरेटिकली बहुत मास्टर है। जैसा देख रहे होगे आप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दुनिया भर के कोविड के मैसेज आ रहे, पर वो कितने सही है कितने गलत है किसी को मालूम नहीं है। वी आर ब्लाइंड फॉलोअर्स, सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। प्रॉपर डेटा एनालिसिस करके जो रिपोर्ट आता है वही सही है। इसके लिए आपके लाइफ में सबसे बड़ा फर्स्ट फॉर्मूला आपको रखना है, K स्टैंड्स फॉर नॉलेज विद प्रैक्टिकल। हमारे पास में उसका एनालिसिस होना चाहिए। जो भी बात हम लोग बोल रहे हैं उसका एनालिसिस होना ही होना चाहिए, तभी हम लोग कोई चीज को फॉरवर्ड कर सकते या कोई चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते। तो पहले बताइए क्या है? Knowledge. Stands for knowledge with practical. Knowledge with practicals. Yes, or in short you can say practical knowledge. ठीक है। सेकंड A है एटीट्यूड। आपको सबको पता होगा, अगर A1 होता है, T20 होता है अल्फाबेट में, तो एटीट्यूड ही ऐसा वर्ड है जिसका टोटल 100 होता है। बाकी कोई भी दुनिया का वर्ड है जिसका टोटल 100 नहीं होता है। हार्ड वर्क का 96 होगा, एजुकेशन का कुछ और होगा, पर एटीट्यूड की अगर टोटल करेंगे आप तो आपको 100 मिलेगा। सो आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहेंगे, बट आपको एटीट्यूड पॉजिटिवली लेके जाना है। सो दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा बेनिफिट। सो दिस A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, अटेंशन एंड एक्शन। ये तीन चीजें ख्याल में रखो आप। यू हैव टू बी अटेंटिव। आपने देखा होगा बहुत समय में हम लोग अटेंटिव नहीं रहते। 4-5 घंटा पढ़ाई करेंगे, उसमें 30-40 मिनट अटेंटिव रहते, फिर अपना माइंड वेव हो जाता है, कहाँ ना कहाँ भाग जाता है। तो इसके लिए छोटे छोटे ब्रेक बीच में लीजिए। जितना भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी कुछ काम कर रहे हो, विथ प्रॉपर अटेंशन कीजिए। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू एंड ऑलवेज बी इन एक्शन। ऐसा एकदम ऐसा स्लो जिंदगी जीने का नहीं, थोड़ा एक्शन में रहो, एक्टिव रहो। जो भी कुछ करना है फिजिकली करो, स्पिरिचुअली करो, पढ़ाई में करो, बट एक्शन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटे दोपहर को सो गए,
रात को 10 घंटे सो गए. That's not a style of a successful entrepreneur. If you want to become a successful entrepreneur, there are a lot of things in life which you can do. So my dear friends, keep this A in your mind. Fix this A in your mind. Attitude, attention, and action. Make a triangle in your life. Attitude, attention, and action. You'll get the result. And S is a skill set. Skills होते हैं ना, skills. हम बहुत सी बार बोलते हैं वो बंदे को कुछ भी आता नहीं है पर बात करने में इतना स्मार्ट है कि सामने वाले को इम्प्रेस कर देता है. सो यू हैव आल्सो इक्वल चांस. वी आर हैविंग 24/7 आवर्स. बहुत सारे आप टीवी में बहुत सारे इंग्लिश के शोज आते हैं, वो शोज को सुनिए. कीप अ हाफ एन आवर टू लिसन फ्रॉम एक्सपर्ट्स. कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, टेक्निकल स्किल, जो भी स्किल आपके बिजनेस को लगती है उसको आज से ही थोड़ा 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 पुश कीजिए. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ये फॉर्मूला रखिए, यू विल गेट अ सक्सेस. एंड H इज फॉर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी. सो ये ऑनेस्टी होनी चाहिए हमारे काम में. हम लोग बहुत सारा काम लोगों को दिखाने के लिए करते, शो ऑफ करते. सो आप शो ऑफ करके दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हो, आपने खुद को नहीं है. तो आप अपने आप में हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, ये फॉर्मूला ख्याल में रखिए. सो एनीवन कैन रिमाइंड मी द फॉर्मूला. व्हाट इज कैश? Knowledge with Knowledge, attitude, skill set, hard work. attitude, positive attention, action, as skill, Knowledge, hard attitude. work, and honesty. ओके. hard work and honesty. सो ये फॉर्मूला आपके ख्याल में आ गया कैश का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If anyone can write down this formula in the chat box, that will be helpful to all other students so that they can take a screenshot. And that will be great help to me also. Okay. So this is the first formula which I share with you. And now second formula. The second formula is 5C. What is the formula? Hello? 5C. 5C. Write it down. 5C. These are very, very important fundamental things which I am putting in your mind. जब दिमाग चलता है ना तो आदमी अंगार लगा सकता है. तो पहले दिमाग को कैसा स्मार्ट रखने का, इसी का मैं बात करता हूँ. बाकी चीज तो सब ऑटोमेटिकली आ सकती है क्योंकि हमको भगवान ने ब्रेन दिया है. कोई कमी नहीं है हमारे पास भगवान की. तो ख्याल में रखिए, पहला सी है चॉइस. क्या है? Choice. What is the choice? There are two choices in your life. Either become a copier or become a creator. What you will like? Creator. Creator. Creator like है, पर हमारे एफर्ट्स कैसे है? Copier जैसे. एफर्ट्स कैसे है? हमको आदत लगा है असाइनमेंट कॉपी करने का, हर चीज को कॉपी करने का. तो हम लोग क्रिएटर बन सकते हैं क्या? नहीं. So we need to change our habits. We have to make our habits like a creator. It will take initially some more time, but जब आपको habit बन जाएंगी ना तो आप धीरे धीरे creator की तरफ जाओगे. So it is my request. Basically engineers should be little bit creators. हम लोग बोलते चाइना आगे गया, इंडिया बहुत पीछे है. तो आपको मालूम है क्या रीजन है उसका? इंडिया में साल के 1450 पेटेंट रजिस्टर होते हैं. कितने पेटेंट किसको मालूम है? पता नहीं, पर पेटेंट का मतलब कोई तो इनोवेशन होता है. और चाइना का इनोवेटिव रेट है 30,000. साल में 30,000 टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है वहां पे, बड़ी बड़ी. और इंडिया में होती है 1450. तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने के लिए हर बंदे को थोड़ा ना थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोलता कि अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है. क्रिएटिविटी के साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हो आप. 5 लोगों के स्किल सेट साथ में करके कुछ तो नया पैदा कर सकते हो. अगर आप में ईगो नहीं है, 5 लोग थोड़ा थोड़ा पकड़ के कोई चीज पकड़े तो समथिंग न्यू कैन बी क्रिएटेड. बट हमारी इंडियन से प्रॉब्लम है, हम लोग ईगोइस्ट है. हम लोगों को यही लगता है कि मैं ही होशियार हूं, मेरे से कोई दुनिया में होशियार ही नहीं है. अपना नॉलेज हम लोग शेयर नहीं करते. सो आई थिंक दैट शुड बी चेंज. सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको आपका पहला सी जो दिमाग में रखना है वो है आई एम अ क्रिएटर. आई एम अ क्रिएटर, नॉट अ कॉपियर. व्हाट शुड बी योर डायलॉग? आई एम अ क्रिएटर. Creator. बोलो, सॉन्ग में बोलो. एखादा जिसका आवाज अच्छा होगा उसने आवाज में बोलिए. कोई गाना गा के बोल सकता है कि ये टैगलाइन? एनीवन?
who can come up with a song, this tagline? I am a creator, not a copier. ये दिमाग में पंच करो रोज 5 बार, सुबह शाम रात को, खाना खाने के पहले ये बोलना है, I am a क्रिएटर। क्रिएटर। अरे आवाज ऐसा लग रहा है जैसा आपको 2-4 I am a दिन में creator. I am a creator. क्रिएटर नॉट अ कॉपियर. आपल्या आवाजामध्ये I am a creator, not a copier. Not a copier. Not आय एम अ creator, not a copier. Good. So you should keep this formula that I am a creator. Second thing, whatever knowledge we have, technical knowledge we have, unless we do not have communication skill and a proper body language, will not be able to, present ourselves properly. So you have enough time of 5 years. Please improve communication skill. English is not a big deal. If you just work for 10-15 days regularly, you will be start speaking English. English सुनने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपने कभी सुना है कि मराठी किसने सिखाई है आपको, हिंदी किसने सिखाई है? नो सर। तो फिर आप सीखे कैसे हो? खुद से। इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे? लोगों का सुन के। बाय लिसनिंग। लिसनिंग, यस, वेरी गुड वर्ड यू आर यूज, लिसनिंग. आप सुनना चालू करो, भला ही समझे या ना समझे. रोज का आधा घंटा एक आधा अच्छा न्यूज देखने का. आजकल तो यूट्यूब पे कितने वीडियोस और कितने सब कुछ इंफॉर्मेशन है. ठीक है. सो पहला मैंने बताया आपको क्रिएशन करना है, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा होना चाहिए क्रिटिकल स्किल्स. क्या होता है क्रिटिकल स्किल्स का मतलब? अभी मैं और एक छोटा सा डायलॉग बताता हूँ. handle the critical skills are that to handle some situations which are ultimate. Yes, so please listen these 2 taglines. मैं सिर्फ टैगलाइन बताऊंगा, ये टैगलाइन आपको जिंदगी भर लिखना है. बोलो, आप मेरे साथ में बोलो, रोज कहो, रोज कहो, क्यों, कहाँ और कैसे. क्यों, कहाँ और कैसे. क्यों, कहाँ और कैसे. रोज कहो, क्यों, कहाँ और कैसे, बहुत मिलेंगे आपको पैसे. रोज कहो, कहाँ कैसे, रोज कमाओ पैसे मिलेंगे. मतलब क्या हुआ? बहुत मिलेंगे पैसे. You have to give the answer to your W's. Why, when, where, what, how. So मैं बोलता हूँ रोज कहो, क्यों, कहाँ और कैसे, बहुत मिलेंगे पैसे, नहीं तो रहोगे साधारण व्यक्ति जैसे. Anyone who can speak out very loudly and clear? Again I will repeat. रोज कहो, क्यों, कहाँ और कैसे, बहुत मिलेंगे पैसे, नहीं तो रहोगे साधारण व्यक्ति जैसे. तो आपको क्या बनना है भाई? रोज कहो, क्या कहो और कैसे, बहुत मिलेंगे पैसे, नहीं तो रहोगे आम इंसान जैसे. Very good. Let us clap for her. Whoever sees, I don't know who sees, but clap for her. थोड़ा तालियां भी बजाते रहो दूसरों के लिए. ताली बजाने से भी ना आदमी का एनर्जी बढ़ जाता है. I am boy. हाँ? Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and next, I think I have told you 3 C's. One is create or copy, communication skill, critical skill, and comfort zone. Always be out of comfort zone. What do you mean by comfort zone? Sitting and just relaxing at home. हाँ, ये comfort zone रहता है ना. आई बघेल, बाबा बघेल, भाऊ बघेल, बहीण बघेल, कॉलेज बघेल, काय होणार नाही. ते काही दिवसच बघतील. आई बाबा 22 वर्षापर्यंत बघतात, नंतर लात मारतात. लात म्हणजे सांगतात आता तू तुझं बघ बाबा. आतापासून तुम्हाला एक्सटेन्शन करायचं आपल्या जीवनाला. स्वतःच्या पायावर उभं राहायची ठाम निश्चय आणि निर्धार पाहिजे. काय पाहिजे? निश्चय आणि निर्धार. स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी ठाम निश्चय आणि निर्धार पाहिजे.
आधार नाही, आधार फक्त 20 वर्षापर्यंत घ्यायचा असतो. नाउ कन्वर्ट युअर सेल्फ फ्रॉम आधार टू निर्धार. निर्धार. आधार आधार बस हो गया. सेल्फ आधार इंडिपेंडेंट. कार्ड बने रहोगे जिंदगी भर. अभी Self आपको निर्धार independent. करना है, कुछ तो भी करना है मुझे जिंदगी में. Yes, समझ sir. में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Getting my point? बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? No. No, sir. No, sir. No, sir. तो अभी मैंने आपको सी वाला फार्मूला बताया, अभी डी वाला बताता हूं. लेट अस स्टार्ट विद द डी. डी फॉर व्हाट इज डी? Daring. डेयरिंग. Dedication. ओके. Dedication. तो मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूं. अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है और अच्छे से बड़ा बनना है तो आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस में आपको बताता हूं. ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बड़े मुकाम पे जाने के लिए दुनिया में कोई भी आदमी रोक नहीं सकता है. आप मेरे वीडियो देखना यूट्यूब पे, आपको मालूम पड़ेगा. आई वॉज अ मराठी स्कूल स्टूडेंट. आई वॉज इन अ विलेज. Then I completed my engineering. Then I completed my MBA. Then I completed my ME. Then I completed my doctorate. And now I am a great motivator speaker. I have built a college, very good college. Around 2,500 students are there already in the college. Degree, diploma, BE, ME, MMS, all courses are there in my college. And I like to interact with my student because I know आज का जनरेशन के साथ में रहोगे तो हम लोग भी जवान रहेंगे. So I always take lectures with the student. And I just follow my, passion. I don't refer any book or notes. ये सब मन में जो आता है मैं बोलते जाता हूँ. So पहला फार्मूला है डी फॉर ड्रीम. क्या है? Dream. ड्रीम. तो सपने आंखों में नहीं देखना है. आपके जो भी सपने पेपर पे उतारो, उसको राइट डाउन ऑन पेपर. ये मेरे सपने हैं, ये मुझे करना है जिंदगी में. कितने लोगों ने अपने सपने बुक पे लिख के रखे या आपके नोटपैड पे लिख के रखे? मी. हाँ, Yes, sir. किती लोकांनी मराठी समजते का सर्वांना? हो. Sir. तर आपले स्वप्न आपण किती लोकांनी एखाद्या पेपरवर किंवा नोटपॅडवर लिहून रोज ते स्वप्न काय आहेत ते वाचलेले आहेत? असे किती लोक आहेत? हाऊ मेनी स्टुडंट्स लाईक दिस दॅट दे हॅव पेंटेड देअर ड्रीम्स? या विजुअलाइजेशन पिक्चर निकाला, जिसको पेंटिंग आता है उसने कहा था अच्छा पेंट निकाला है कि भाई मुझे बिल गेट्स के जैसा बनना है, उसका टोपी, उसका स्टाइल, ऐसा कुछ तो बना के एक विजुअलाइजेशन किया है क्या अपने आप को? एनीवन? इफ नॉट डन, स्टार्ट फ्रॉम टुडे. इट गिव्स यू मैक्सिमम एनर्जी टू परफॉर्म. आपको रोज आपकी पिक्चर देखने की, आपको करना क्या है? आप एक पिक्चर निकाल के रख दो आपके टेबल पे, रोज देखो उसको कि ये मेरा ड्रीम है, इस ड्रीम को मुझे अचीव करने के लिए कुछ तो करना है. सिद्धेश म्हात्रे. सिद्धेश, स्वप्न मोठं बघायचं, स्वप्न छोटं बघायचं नाही. श्रीमंतासारखं स्वप्न बघायचं, भिकाऱ्यासारखं स्वप्न बघायचं नाही. काय सांगितलं सिद्धेश? हो सर. काय सांगितलं बेटा? बिग ड्रीम. स्वप्न श्रीमंतासारखेच बघायचे, भिकाऱ्यासारखे स्वप्न बघायचे नाही. 10,000ची नोकरी करणार, 12,000ची नोकरी करणार नाही. आय वॉन्ट टू बिकम बिग पर्सन. माझं नाव असलं पाहिजे. मी आलो या जगात तर मला ओळखलंच पाहिजे लाख लोकांनी. असं जोपर्यंत तुम्ही फायर करत नाही ना आपल्या डोक्यामध्ये, जोपर्यंत आग लागत नाही ना, तोपर्यंत चांगली बाग बनत नाही. बाग म्हणजे समजतं ना काय? आपल्या जीवनाचं चांगलं गार्डन. So the first important thing is that you should have proper and correct dreams. तुम्हाला कसं वाटतं लेक्चर, तुम्ही फीडबॅक पाठवत जा, तर मला सुद्धा एनर्जी येईल बोलायला. दुसरी गोष्ट, पहिला डी कोणता आहे? ड्रीम. स्वप्न कसे बघायचे? Dream. If you want a dream, see big dream. रिच पर्सन. लुजर नाही, लेजेंड बनून मारायचं. हा, if you want to get a cream, see the big dream. क्रीम म्हणजे मलाई होती है.
अगर आपके जिंदगी में आपको क्रीम चाहिए तो आपको बड़े ड्रीम देखना है. सेकंड डी इज डायरेक्शन. सेकंड डी इज अ डायरेक्शन. आपल्याला माहिती नसते, आपल्याला राईट डायरेक्टर जर भेटला, राईट एक्सपर्ट जर भेटला, तर साधारण ते साधारण माणूस सुद्धा फार मोठं होऊ शकतं. काही फार मोठं रॉकेट सायन्स नाहीये सक्सेसफुल होण्यासाठी. आपल्याला प्रॉपर डायरेक्शन भेटली पाहिजे. जसं आर्मॅट आता हेल्प करतंय, असे आम्ही दर महिन्याला असे 5-6 सेमिनार ठेवणार आहे, जेणेकरून मुलांना जीवनामध्ये काय करायचं, कसं करायचं, टेक्निकल नॉलेज कसं वाढवायचं, कम्युनिकेशन स्किल कशी वाढवायची, निगोशिएशन स्किल कशी वाढवायची, याच्यावर काम करणार आहे आपण. सो सेकंड इज व्हॉट? डायरेक्शन. फर्स्ट इज द ड्रीम. सेकंड इज अ डायरेक्शन. आता बघा थर्ड इज अ डेअरिंग. आता बऱ्याच लोकांना ड्रीम्स आहेत, डायरेक्शन सुद्धा घेतली, पण तो हिम्मत होत नाही. काका काय बोलेल, बाबा काय बोलेल, मामा काय बोलेल, मित्र काय बोलतील. अहो, या जगामध्ये सक्सेसफुल माणसालाही बोलतात आणि नॉन सक्सेसफुल माणसालाही बोलतात. त्यांची चिंता करायची नाही. आपले जर दृढ निश्चय चांगले असतील, आपल्याला जर काही चांगलं करायचं असेल, तर जीवनामध्ये थोडी रिस्क घ्यावीच लागते. रिस्क घेतल्याशिवाय कॅल्क्युलेटेड रिस्क ही फार महत्वाची आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला आपल्याकडे डेअरिंग पाहिजेच पाहिजे. सो यू मस्ट डेव्हलप अ डेअरिंग ऑल्सो विथ यू माय डिअर फ्रेंड. तर पहिलं काय? पहिलं ड्रीम, दुसरं डायरेक्शन, तीसरं डेअरिंग, चौथं डिसिप्लिन, अनुशासन होना. जिसके पास अनुशासन नहीं है उसको शासन शासन देता है. इसका मीनिंग क्या हुआ स्नेहल? हॅलो सर, तुमचं युट्यूब चॅनलचं नाव सांगाल का? काय म्हटलं? तुमच्या युट्यूब चॅनलचं नाव सांगाल का म्हटलं? You just type Lavendra yes Bothra. What sir? I will write it down. Mayank sir, please write down my name. Yes sir, yes sir. Yes, and you just go through it. हाँ बोलिए. तो पहले क्या समझा आपको? डी में कौन सा पहला डी है? ड्रीम. ड्रीम. दूसरा डायरेक्शन. तीसरा डेअरिंग. चौथा डिसिप्लिन. ये वाक्य ख्याल में रखो आप हिंदी में. जहां नहीं है अनुशासन, वहां मिलता है शासन. शासन का मतलब पनिशमेंट होता है. यस, क्या मीनिंग बताया मैंने? जहाँ नहीं अनुशासन वहाँ मिलता है शासन. जहाँ नहीं होता अनुशासन, अनुशासन का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन. हमको अपने आप पे सेल्फ डिसिप्लिन रखना है. ऐसा नाही की हवेत जसं आलं तसं धावायचं आहे. आपलं स्वतःचं प्लॅनिंग असलं पाहिजे. म्हणून एक 5P लक्षात ठेवा. परफेक्ट प्लॅनिंग प्रिव्हेंट्स पुअर परफॉर्मन्स. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? परफेक्ट प्लॅनिंग प्रिव्हेंट्स पुअर परफॉर्मन्स. आपली प्लॅनिंग बरोबर असली पाहिजे. प्लॅन युअर वर्क अँड वर्क युअर प्लॅन. सिंपल फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज दिस. वो ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. सवेरे उठ के आप प्लान करो, आज दिन भर में मैं क्या करने वाला हूं, और वही जितना लिखा आपने, जितना भी आपका कैपेसिटी है उतना ही लिखो. ज्यादा मत लिखो, पर उतना करके रखो रात को सोने के पहले. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस. प्लान युअर वर्क एंड वर्क युअर प्लान. क्या फॉर्मूला है? प्लान योर वर्क and work your plan. इज इट सो सिंपल फॉर्मूला और वेरी डिफिकल्ट? सिंपल. सिंपल. मगर अपने पास में डिंपल आती है क्या? डिंपल मतलब गाल पे खड़ा आता है अच्छी से खुशी का कि मैंने किया ये. क्योंकि हम लोग प्लानिंग करने में मास्टर है, पर उस पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रॉब्लम है. आप छोटे ही 4 काम लिखो. मैं नहीं बोलता हूं कि आपको 40 काम का प्लानिंग करना है. जितना आपका कैपेसिटी है उतना ही लिखो. अगर आप 4 काम कर सकते हो तो 4 ही काम लिखो, पर शाम को देखो कि मैंने आज जो प्लान किया था वो प्लान मैंने कंप्लीट किया कि नहीं. क्या समझा? हेलो. Complete your tasks. Yes. And the next key is a deadline. डेडलाइन को रिस्पेक्ट करो. व्हाट डू यू मीन बाय डेडलाइन?
आप खुद ही जितना अपना time डेडलाइन हमने फिक्स तय करो किया कि है। भाई Last day of work. यस ये काम मुझे ये टाइम में खत्म करना है। आपने एक बार डेडलाइन फिक्स किया विथ योर कैपेसिटी, देन प्लीज वर्क ऑन दैट कैपेसिटी। वो डेडिकेशन रखो, डेडलाइन को रखो दिमाग में कि ये मेरा डेडलाइन है ये काम करने का। जैसा आपने बोला अभी कुछ आप जो पढ़ रहे हो इसका डेडलाइन है 8 दिन में मुझे इसमें मास्टर बनना है, तो आज जो सर ने पढ़ाया आपको उसमें अगर आप बराबर प्रैक्टिस करोगे 2 घंटे की तो आपको कल का लेक्चर भी अच्छा इंटरेस्ट आएगा। सो विल गेट अ लिंक। एक साइकिल होता है ना, साइकिल चेन होती है साइकिल में, उसमें लिंक को लिंक जुड़ती है। ठीक है। और नेक्स्ट भी होता है डेडिकेशन। आपको जो भी काम करना है डेडिकेटली करना है, ऐसा वैसा काम नहीं करना है। तो ये हो गया 5D फार्मूला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Are you interested to continue so I can take more 5 minutes? Yes, sir. हाँ. sir. आपले आता मराठीचे 2 फॉर्म्युले लिहून घ्या. Sir, हाँ. sir, what's the fifth C stands for? काय म्हटलं सर? सर 5वा C कशासाठी असतो? नाही, पहिला सांगितलं मी तुम्हाला क्रिएशन आणि कॉपी हे 2 C झाले ना. नाही सर, तुम्ही चॉईस, क्रिएटर, कम्युनिकेशन, काय बोलतात, क्रिटिकल स्किल्स आणि कम्फर्ट झोनच सांगितला. लास्ट C बाकी आहे. बरोबर. तर एक सी घ्यायचं असेल तर तू कोणताही घेऊ शकतो. कॉन्फिडन्स घे, कॉन्सन्ट्रेशन घे, तुझा सी घे ना. कुछ अपना भी लेना पड़ता है रे भाई. यस सर. समझा ना. एक तेरा सी ले जो अच्छा लगता है. बहुत सारे सी है. कॉन्फिडेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कंपेयरिंग है. कुछ को बढ़ाओ, कुछ को कम करो. अपने को क्या आदत है मालूम है क्या? हम स्टूडेंट को आदत है कंप्लेनिंग करने का, टीचर को आदत है कंप्लेनिंग करने का. इंडिया के 90% टाइम किस में जाता है रे? कंप्लेन. कंप्लेन. अपना वो एकदम प्यारा वर्ड है. माझ्या आईने हे नाही केलं, माझ्या बाबांनी हे नाही केलं, माझ्या मित्रांनी हे नाही केलं. अरे तू स्वतः काय केलं ते बघ ना पहिले. व्हॉट इज युअर कॉन्ट्रीब्युशन? सो दिस इज द सी. व्हॉट इज माय कॉन्ट्रीब्युशन इन माय फॅमिली, इन माय कॉलेज? हैव यू थॉट अपॉन दिस? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. हाँ, तो आपका कंट्रीब्यूशन लाइफ में कितना है ये आप खुद ही तो जज कर सकते हो ना. आदमी खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता है ना, कि बोल सकता है? नो सर. कैन यू स्पीक लाइव विथ यू? नो सर. दुनिया के लिए झूठ बोल सकते हैं आप 4 No, घंटे sir. पढ़ के घर में आई को बोल सकते हो मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ. बराबर है ना. तो ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड को मिनिमाइज कर दो. जहां पे जरूरी है वहीं कंप्लेन करो, जहां पे जरूरी नहीं है, जहां पे आप पोस्टपोन कर सकते हो, पोस्टपोन दैट कंप्लेंट्स. देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम इन कंप्लेनिंग एंड कंपेयरिंग एंड क्रिटिसाइजिंग फॉर द पीपल. अगेन आई विल रिपीट, देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग कंटिन्यूअस कंप्लेनिंग, कंप्लीट डेली कंपेयरिंग एंड क्रिटिसिज्म. इसको जितना कम कर सकते हो उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है. Negative thought process create negative impact on your body, creates negative impact on your mind, and creates negative impact on your soul. म्हणजे शरीरावर, आत्मावर आणि तुमच्या मनावर ती शक्ती बरोबर नसते. ती निगेटिव्ह शक्ती आहे. परंतु आपल्याला निगेटिव्ह गोष्टी जास्त आवडतात. प्रॅक्टिस करावी लागेल की आपण आपला माइंडसेट पॉझिटिव्हलीच नेला पाहिजे. We should take our mindset positively towards positive direction only. Are you getting my point? Yes, sir. So contribution of yourself in any organization, in any family, anywhere, तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन दिसलं पाहिजे की हा यस ही स्नेहा आहे ना, ही खरंच कॉलेजसाठी चांगलं काम करते, घरामध्ये चांगलं काम करते, प्रत्येक ठिकाणी मित्रांना मदत करते, असं कॉन्ट्रीब्युशन असलं पाहिजे. आपलं पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन आहे की निगेटिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन आहे तुम्हाला स्वतःला समजतं. तुम्ही रात्री झोपताना 2दा विचार करा की आजच्या दिवसाचं माझं कॉन्ट्रीब्युशन पॉझिटिव्ह आहे का न्यूट्रल आहे का निगेटिव्ह आहे. तुमचं मन तुमच्याशी खोटं बोलणार नाही. तो सांगेल तुम्हाला की बेटा आज तुम्ही गलती किया है. Are you getting my point? What I am trying to tell you, my dear friends? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, Anyone sir. want to ask question? नहीं तो फिर और 2 फार्मूले बता देता हूँ मैं आपको. बता दूं? बता दो सर. हाँ. बता दो सर. लिखो. मराठी में कर का मतलब क्या होता है?
काहीतरी समथिंग ऍक्शन. समथिंग ऍक्शन, काहीतरी कर म्हणतो ना, जेवण कर, बरोबर आहे, अभ्यास कर, डू समथिंग इन लाइफ. हाँ, डू समथिंग इन लाइफ. तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला देता हूं. नॉलेज म्हणजे पहिला के, करचा, नंतर अ म्हणजे ऍक्शन आणि आर म्हणजे रिझल्ट. जर तुम्हाला जीवनामध्ये चांगले रिझल्ट आणायचे असतील तर नॉलेजवरही लक्ष ठेवा आणि त्या नॉलेजचं तुम्ही काय ऍक्शन घेता त्याच्यावरही लक्ष ठेवा. नुसतं बुकिश नॉलेज वाचून जीवनामध्ये काही भेटत नाही. बुकिश Yes, नॉलेज sir. डोंट कॅरी मच मोर इम्पॉर्टन्स इन लाइफ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So you have to act something. कुछ तो नया नया करना है. इसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ? आई फॉर इनोवेशन. थोड़ा सा ना थोड़ा इनोवेट करते रहो अपने काम के करने के तरीके को. ठीक है, तो आपको अगर रिजल्ट चाहिए लाइफ में तो आपको ये k प्लस ए इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला ख्याल में रखना है. दूसरा फॉर्मूला है c प्लस आर इज इक्वल टू ओ. क्या फॉर्मूला है? C प्लस आर इक्वल टू ओ. हा, सी म्हणजे सरकमस्टान्सेस, म्हणजे आपल्या मराठीत म्हणायचं तर परिस्थिती. आता बऱ्याच लोकांच्या परिस्थिती खराब असतात, बरोबर आहे की नाही? कोविड मध्ये तर अजून खराब झालेली आहे परिस्थिती, बरोबर? पण एक्झाम्पल घ्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरची परिस्थिती कशी होती, त्या जमान्यामध्ये आपल्या आई वडिलांची परिस्थिती कशी होती आणि आज आपली कशी परिस्थिती आहे? खराब आहे की चांगली आहे त्यांच्यापेक्षा? बेटर आहे. बेटर आहे ना. आपल्या आई वडिलांनी जे जग बघितलंय त्याच्यापेक्षा आपली परिस्थिती चांगली आहे की नाहीये? आहे ना. पण तरी आपण जास्त रडतो की ते जास्त रडतात? आपण जास्त फ्रस्ट्रेट होतो की ते जास्त फ्रस्ट्रेट होतात? आपण डिप्रेशन मध्ये आहे की ते डिप्रेशन मध्ये आहे? का रे असं? याचं उत्तर काय? याचं उत्तर काय? तर कशाचं? डिप्रेशनचं? त्याचं उत्तर हे आहे बेटा, सरकमस्टान्सेस प्लस आर म्हणजे दोन ऑप्शन आहेत तुमच्याकडे जीवन जगाचे. एक ऑप्शन आहे रिॲक्शन द्यायचं, एक ऑप्शन आहे रिस्पॉन्स द्यायचं. जसं मी एक एक्झाम्पल प्रत्येकदा सांगत असतो. एका हॉटेलमध्ये आपण गेलो, जेवायला बसलो, वॉच आपला तिथे वेटर बरोबर उभा आहे आणि एक कॉक्रोच आला आणि एका मुलीवर त्या कॉक्रोचने शोल्डरवर बसला. काय होणार? हॅलो, ती मुलगी ओरडणार. जोराने ओरडणार की नाही? हो सर. ओरड. आणि तोच कॉक्रोच वेटर वर बसला तर वेटर काय करणार? झटकून देईल. झटकून देईल ना. मग एकाने काय दिली? रिॲक्शन दिली. पूर्ण हॉटेल मधला माहोल खराब करून टाकला, बरोबर आहे की नाही? करणार, ओरडणार, म्हणजे हॉटेलवाले सर्व जेवणार इकडे तिकडे बघणार. आणि दुसऱ्याने काय दिला? रिस्पॉन्स दिला की अरे आया है ना, चलो ये भी दिन जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा. ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट से उसने उसको झटक दिया. तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जिंदगी में आएंगे. आपको चिल्लाना नहीं है, आपको क्या करना है? अरे ये आया मैं इसको सॉल्व कर लूंगा. जास्त लोड घ्यायचं नाही. प्रॉब्लम आते ही है. किसको आते प्रॉब्लम? जो सॉल्व कर सकता है उसके पास में प्रॉब्लम आता है. जो सॉल्व नहीं करता उसके पास क्या प्रॉब्लम आएगा? ये एटीट्यूड रखना चाहिए. अगर मेरे को भगवान ने प्रॉब्लम दी है इसका मतलब मुझे सॉल्यूशन भी दिया है इसका. When God closes one door, He opens another 10 door for you, for your improvement in the life. जेव्हा देव एक दरवाजा बंद करतो तेव्हा तो 10 दुसरे दरवाजे तुमच्यासाठी उघडतो. ही भावना तुमच्यामध्ये पक्की पाहिजे. सो सी सर्कमस्टान्सेस प्लस आर म्हणजे तुमच्याकडे चॉईस आहे, रिॲक्शन द्यायची आहे की रिस्पॉन्स द्यायचा. आपण लगेच रिॲक्शन देतो. अरे यार, my daddy is not taking my care, my mother is not taking this, and we start complete day in our ailing and making others at fault. Is it a good thing? No, sir. No, sir. So, my dear friends, please keep this formula in mind. C plus R is equal to O, that is circumstances plus reaction or response. त्याच्या प्रसार तुम्हाला आउटकम मिळेल. जर तुम्ही रिॲक्शन दिली तर आउटकम बरोबर येणार नाही. रिस्पॉन्स दिला तर तुम्हाला चांगला आउटपुट मिळेल. आणि एक सी अजून सांगायचा राहिला तो सांगून देतो. कोणतंही काम कोलॅबरेशन मध्ये करा. कोलॅबरेशन मतलब म्हणजे क्या? 4-5 लोग मिलकर अगर कोई काम करते ना
और अगर सब लोग साथ में मिलके करते ना और अच्छे मन से करते ना तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। तो इसके लिए बोला जाता है, टीम का लॉन्ग फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो हमारा जो ये रहता है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरा उम्र 54-55 साल का है। हम लोग जब छोटे थे ना तो अपने फ्रेंड को हेल्प नहीं करने का, ऐसा लगता था कि उसको ज्यादा मार्क मिल जाएंगे। अरे बाद में 5-10 साल के बाद में कोई फ्रेंड तुम्हारे साथ रहता नहीं है। जितना मदद कर सकते हो उतना करो, जितना नॉलेज शेयर कर सकते हो उतना करो। जितना आप सारे शेयर करोगे वो भी आपके साथ शेयर करेगा और आपका भी बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा। सो स्टार्ट शेयरिंग द नॉलेज, डिस्कस करो प्रॉब्लम को। और आखिरी में बोल रहा हूं मैं वापस, रोज कहो क्यों कहा और कैसे, बहुत मिलेंगे पैसे, नहीं तो रहोगे आम व्यक्ति जैसे। ये डायलॉग आप आपके जिंदगी में रख लो। यू आर अ इंजीनियर, यू शुड स्टार्ट योर लाइफ विद आस्किंग टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चन को कौन पूछ सकता है भाई? मैं जोर से इसके लिए बोल रहा हूँ बीच में कि सीधा दिमाग में खड़ाके से घुस जाना चाहिए। कैसा? यस। कैसा घुसला पाहिजे? खड़ाके से। एक बार घुस गया तो बार बार जिंदगी में याद ही रहना चाहिए कि डॉक्टर बोथरा ने कुछ 15-20 मिनट लेक्चर लिया था आपका। यू शुड नॉट फॉरगेट माय लेक्चर थ्रू आउट द लाइफ। उस इंटेंशन से लेक्चर देने की कोशिश रहती है मेरी। यस सर। Okay, now let us start with the question answer. If you have time, you can ask me a question. Yes, anybody is having any questions related to their motivation, then they can ask. Sir is available for 5 minutes. आणि एक गोष्ट अजून सांगतो, आपल्या लोकांमध्ये ना प्रश्न विचारायला भीती वाटते। दुसरा काय म्हणणार, माझा प्रश्न बरोबर राहणार की नाही, अरे कोणाला आठवते कालचं काय खाल्लं, आठवते का? नाही आठवत। 8 दिवसापूर्वी काय केलं ते काय आठवत नाही। मग कशाला एवढं सेल्फ उबेज राहायचं, बिनधास्त प्रश्न विचारायचे। हा, व्हेरी गुड। So can you tell your story in a short? माझी स्टोरी सांगू? टास्क ठरवते ना ते मी काही दिवसांसाठीच करते, त्यानंतर म्हणजे नाही का कन्सिस्टन्स राहत नाही। त्याच्यासाठी सांगितलं ना, तो पिक्चर किंवा ते रायटिंग आपल्या वहीवर लिहून ठेवा ना, आपल्या भिंतीवर टांगून ठेवा ना, हे मला करायचंय। रोज रोज बघितलं तर माणसाचं मन होतं ना। हाँ, ऐसा है ना, जो दिखा वही बिका। जे आपण रोज रोज बघणार तेच रोज रोज करणार। ठीक आहे, एकाने मला विचारलेलं आहे तुमची स्टोरी सांगा। मी 4 मिनिटात माझी स्टोरी सांगतो। मी एक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे। अमरावतीच्या जवळ माझं एक गाव होतं धनज म्हणून, तिथे मी 4थी पर्यंत मराठी शाळेमध्ये शिकलो। जिथे शाळेमध्ये भिंत सुद्धा नव्हती, आम्ही बऱ्याचदा झाडाखाली शिकायचो। 4थी तिथून पास केली। मग अमरावती जिल्हा आहे जसा ठाणा आहे त्याच्यापेक्षा जवळपास 20% छोटा असेल, तिथे आम्ही 5वी ते 10वी हमालपुरा असा म्हणून एरिया होता, जिथे बरेच मुलं हमालाची असायची। तिथेच मी शिक्षण घेतलं माझं 10वी पर्यंत मराठी मीडियम मध्ये। आय वॉज अ मराठी स्टुडंट। पहिल्यांदा मला 10वी मध्ये 60% मार्क मिळाले। नंतर मी 12वी सायन्स मध्ये केली। फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग मध्ये मी नापास झालो। 8 पैकी 7 विषय। किती? 7 केट्या 7 केट्या लागल्या पहिल्या। आणि नंतर माझ्या डोक्यामध्ये मी आग भरवली की आता काहीतरी करून दाखवायचं। माझ्या बापाने मला टॉन्ट मारला की तुमच्यासाठी एवढे पैसे खर्च करतो, भिगाड्यानो तुम्ही काय देता मला? आणि ते माझ्या डोक्यात घुसलं। आणि नंतर मी जे सांगितलं ना तुम्हाला डायरेक्शन, डी फॉर डायरेक्शन, तर त्यावेळेस विद्यापीठामधला जो टॉपर आहे त्याच्याशीच फ्रेंडशिप केली मी। आणि त्याच्यासोबत माझं जीवन मी पुढे कंटिन्यू केलं। सेकंड इयरला मी पूर्ण केट्या पास केल्या। थर्ड इयरला फर्स्ट क्लास मध्ये पास झालो आणि फायनल इयर मध्ये मेरिट मध्ये पास झालो। आणि माझा त्या वेळेस पेपर मध्ये नाव आलं माझं फोटो सहित का लवेंद्र बोथरा स्टूड 4th इन द अमरावती युनिव्हर्सिटी। तिथून माझं BE कंप्लीट केलं। नंतर मी मुंबईला आलो। मुंबईला प्रोफेसरशिप जॉईन केली दत्ता मेघेला। त्याच्यासोबत मी MBA पास केलं माझं। त्याच्यानंतर ME केलं मास्टर ऑफ इंजिनिअरिंग VJTI वरून। VJTI माहित आहे ना, वीर माता जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, तिथे लोक मरतात ऍडमिशन घ्यायला। तिथून माझं ME पास झालो फर्स्ट क्लास मध्ये। त्याच्यानंतर मग मी बरेच कामं केले। म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं माझं डेअरिंग आणि रिस्क घेतच राहतो मी। काय ना काय असे 20-25 कामं केले जीवनामध्ये।
त्याच्यातले 1-2 मध्ये यश मिळाले आणि एकामध्ये तुफान यश मिळालं आणि जीवन बॅलन्स झालं. फेलियर येत राहणार, फेलियरला घाबरायचं नाही. आज का फेलियर कल का सक्सेस आहे. आप यश म्हणजे काय रे? काय सर? अपयश मधले आपला ना वरती पाठवून द्या, म्हणजे मग बाकी काय राहिलं? यश. समजलं ना? यशाची पहिली आपको क्या करना है? अपयशच सर यश मध्ये यशला कन्वर्ट करतो. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो जो आप है ना, अपन मराठी में बोलेंगे उसको, आपको थोड़ा ऊपर आप कर दो, तो बाकी क्या रह गया नीचे? यश. आप है ना ऊपर, मालूम है ना, इतना तो इंग्लिश आता है ना आप लोगों को? यस सर. तो एक वर्ड लिखा है अपयश, Yes, sir. उसमें से आपको ऊपर कर दीजिए, यश को वहीं रहने दीजिए, तो आपके हाथ में क्या आया फिर? यस. बस सीधा है, सिंपल. फिर मैं बिल्डर लाइन बना, आई वॉज इन अ पॉलिटिक्स, देन आय हॅव कम्प्लिटेड माय PhD. 2008 मध्ये आमचं आर्मेड इंजिनिअरिंग कॉलेज उघडलं. मी साधा मास्टर होतो, पण स्वप्न मोठे बघायची सवय होती. बरेचसे लोन घेतले, बऱ्याचशी खाटापिटा केली आणि कॉलेज टाकलं. आज मला प्राऊड फील होतं की माझ्या कॉलेजमध्ये आज 2200 मुलं शिकतायत ऍज ऑन टुडे. आणि हेच मी सर्वांना शिकवतो, किए जा भलाई का काम, तेरे दुखड़े दूर करेगा राम, क्या तूने पाया क्या तूने खोया इसका हिसाब करेगा राम, किए जा भलाई का काम. यस सर. हे वाक्य लक्षात ठेवा. चांगलं काम करा, चांगली मदत करा लोकांना. जशी मदत तुम्ही कराल तसं तुम्हालाही लोक मदत करतील. आणि सर्व मिळून कोलॅबरेशन करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करा. अँड विल गो अहेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बोलिए, और किसको कुछ पूछना है? ठीक है, मयंक सर. Yes sir. Any other question they want to ask? Otherwise, Yes sir. There is no question in chat box now, and I Okay. have forwarded your YouTube channel name also. Yes. To them. They will definitely Yes. watch the videos, sir. Thank Yes, you. yes, yes. Thank you very much, sir, for the motivation. share my mail Thank ID you so to much, them. sir. Yes sir. Yes. माझा मेल आईडी त्यांना फॉरवर्ड करा. किसको अगर कोई Thank you, तकलीफ sir. है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप डाल सकते हो मुझे. Thank you, sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay sir. Okay. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Okay, beta. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Everyone, thanks a lot. Thank you, sir. Okay, bye, dear Thank you, sir. friend. So dear students, we will meet tomorrow at 11 a.m. Sir, आज जैसे schedule रहेगा कल का भी. हाँ, same schedule रहेगा. You will get link also in Telegram and as well as wherever you got the link, then again you will get the link. And the same link will be there. Huh? You can join by the same link, 11 a.m. Okay, sir. 11 a.m. no? Yes, yes. Okay, Oh, sorry, sir. 10 a.m. Sorry, 10 a.m. 10 a.m. Sorry. Yes sir. Yeah. The time is 10 a.m. to 1 p.m. Okay. Okay. Yes, Okay, yes. sir. Okay, sir. Sir, hello. Yes. So जैसे sir बेटा आपकी आवाज कट रही है. आपकी आवाज कट रही है. You can put in the chat box. Yes, sir. I will provide all the material access to all the students by tomorrow. You will get one SMS. By that SMS, you can get all the material. Okay. We will take one session, small session, and then Okay, sir. you will get to know that how to access the contents. Okay. Okay, sir. Yes. Hello. Yes. Sir, actually, I was not at the first lecture. Sir, I am not. No at problem. the Telegram group. You can attend YouTube by YouTube. We have shared YouTube link also in the Telegram or in the chat box. Sir, but I am not in the group. You are not in the Telegram group? No, sir.
So you can attend where you registered, from where you registered. Actually, that's the problem actually. I forgot to register and didn't attend the first lecture. Okay, no problem. You please register yourself. So And can I get the link for registration? so from which college you are? I'm from Armite, sir. You are from Armite? Yes, sir. From first year? No, sir. From second year. Second year branch? Or mechanical. Mechanical. Okay, okay. I will ask your HOD to send the that link to in your group. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. So from there you can register. Thank you, sir. Okay. Sir, can you send the recording of this video? Yes, yes, dear. Actually, you will get recording on YouTube also, and you will get access from tomorrow. We are giving access to today to all the students, those who have registered to the AdFly LMS, and in that you will find the link of that this session. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, yes. Thank you so much, sir. Thank you. And YouTube link will be shared in Telegram group for today's session. Sir, we want to register on your website. From which college you are? Vicky sir? Akash sir, can you share the registration link in the chat box? Those who have not registered till now, they will register. Yeah, sure, sir. Right away. Yeah. Registration link and Telegram link. Okay, sir. Yes. So they will attend lecture. They will register and as well as they will join the Telegram group. Sure, sir. So please wait for a while. I will share you right now.
I think we should close this session. Yes, sir. I guess all of the students are there. Please, those who have not registered, please copy paste this link to your WhatsApp or anything else. So I'm closing this meeting. Done, sir. Done, sir. Yeah. Thank you all. Thank you, sir.